হ্যালো ম্যাম, আপনাকে পোস্ট করে দেওয়া আছে। Okay. Welcome back all after lunch. I understand after lunch it is very hard for people to just keep their eyes open. That's the reason my topic for the day is managing behaviors, thoughts and ideas in a classroom. So I will try to make it as interactive as possible so that we don't feel sleepy. Okay. Any questions? It would be an interactive session. You can ask your question during the PowerPoint presentation. Okay. So the topic is management thoughts and ideas relating to behaviors in classroom. Why is it not been scrolled? Just give one. Okay. So before we start with the presentation, I would like to ask you, what is behavior? Is it not 2 o'clock that you started earlier? It's already 2, sir. Already 2? Yes. 3-4 minutes, still check your watch. Okay, anyway. So someone introduce you? No, sir, I just started by myself. We have already started on. I think it's, let's move with the presentation. I think it's 22 slides that needs to be covered within 1 hour. Okay, go ahead. Okay, so we'll start with what is behavior. So as we know, since the topic for the day is management, thoughts and ideas relating to behavior in classroom, we need to understand what exactly is behavior. Behavior is basically how we conduct to certain stimuli. Suppose someone talks to you in a very subtle manner, you tend to talk to them in a very subtle manner. You don't get angry with them. So it's how you behave in an external stimulus. Again, behavior is being taught to children, to people from a very young age. Before we start, next would be the root cause of a child's behavior. So there are 5 categories on which we can describe how a child behaves. Can anyone tell me what is a biological behavior? You can just unmute yourself and just say, because I won't be able to access the chat box. So it will be easy if someone just want to say, what is biological cause of a child's behavior? Any answer? I understand post-lunch, it's sometimes too tiring, but that's the reason I wanted to be interactive so that we can talk and don't fall asleep. Okay, no answers then? Okay, biological is when a child is born, he or she from the environment gets certain clues on how to behave in certain situations. That we consider it under the biological factor. Second is the behavioral factor. Again, from people who have psychology background, they know about behavior modification through conditioning. So that is called how we teach a child. Like yesterday when the speakers were saying about positive reinforcement, negative reinforcement, that is also how we take care of a child's behavior. Cognitive is how a child thinks and behaves on a certain level. Systematic is, again, since we all are social animals, we need to behave in certain situations regarding family, society, school, playground. If you consider, all those things have different behavior aspects. The way you behave, the way a child behaves or we behave in our family, we normally do not behave when we are with our friends. There is a shift of behavior change from each different aspects. Anyone has any question before I go to psychodynamics? Is everyone present? Wait, let me just check. Okay, no, I don't see any questions. Okay, then psychodynamics is
When we have done certain things and after that we understand the consequences. Let me give you an example here. Like a child has said something lies, he has said lie to the family or to his parents. मैम आप अनम्यूट हो जाइए मैम. Okay, so psychodynamics says, suppose a child has said lies to his parents and the parents somehow came to know about it. The parents gave the child a thrashing, a scolding. So the child remembers it. The child's kinesthesia, that is his body memory, remembers how he was treated. So next time when he goes to the certain situation like this, he will either change his behavior. Sometimes he manipulates it not to get the same kind of a reaction from the parents. Else, what they do is they try to change themselves, feel what went. Can I ask people to just mute themselves? Thank you. What is classroom management? I would request people to just interact because I know post-lunch sessions are too boring. So that's the reason I want people to answer. You can either write in the chat box or you can just unmute yourself and just speak. What is classroom management according to you? Ma'am, how well you control the environment of the class and manage everybody, the students that are present. Absolutely, thank you. Absolutely, there are 5 pointers as what is classroom management. It's a process of as to how the lessons are learned. It is how to prevent disruptive behavior. Disruptive behavior means how when the children do not want to stay focused. Again, this can be of several reasons. Maybe they find the classroom too boring. Because again, given by the education system, we follow a very methodical process of teaching. So sometimes children with different abled who may not find it very keen for them to understand. So that's the reason they try to throw tantrums, they cry, else it can be due to there's some other problems, maybe from the family or from the classroom. The process of managing behavior also falls under classroom management. Designing activity monitoring and follow-up. How many of you who are special educated teachers do follow this as a classroom management? I understand designing activity. How many of you monitor and follow up? Ma'am, we attempted that on a large scale in our school, even though it was relatively new, that there was this behavior practice of all the time going to the toilet, like randomly the kids would want to all leave the classroom at the same time. So we established a rule where we ourselves, all the teachers and the principal in collaboration, of course, we came up with the idea of having passes, like gate passes to leave the class. So that regulated the behavior a whole lot because they had to, unless they obtained a pass, they couldn't leave to go to the toilet as an excuse. So we monitored it well. In that sense, I feel that behavior within 2-3 months that started, because we did it for both boys and girls. So it reduced that pattern a lot. Yes. So thank you for your feedback. And the last point of your classroom management is content, conduct, and covenant. So conduct is you think of what are the things that needs to be managed in the classroom. Then you conduct the behavior, teach your children, teach the students how to behave in certain situation. And covenant is an agreement that you have an agreement with the child. Whether if you do this, you will be assorted, you will be given certain liberties. Like again, like yesterday, we were discussing about punishment and reward and punishment. It's basically an agreement with the child. If you're doing this, you will be getting this certain amount things from the teacher or from your peer group, else you're not getting it. Effective classroom management is again, the pivotal role here is basically of the teacher. The teacher needs to be a successful, well-mannered, disciplined,
and should be cognitively balanced. Else you won't be able to handle children, whether it's a special school, whether it's a normal school. So again, there are all pointers. We'll only discuss the pointers. The 4 C's of classroom management is a classroom design. Can anyone tell me what is a classroom design? Answers can be right or wrong. We don't care. I just want people to just answer so that the post-lunch sleep is just a few minutes away. मैम मैं विशाल बोल रहा हूँ. क्लासरूम डिजाइन ऐसा है मैम, कोई विजुअल इम्पेयर बच्चा होगा तो उसको बिठाने का, और हियरिंग इम्पेयर हार्ड ऑफ हियरिंग होगा तो उसको बिठाने का स्टाइल का मैनेज करने का जो स्टाइल है उसको ही क्लासरूम डिजाइन बोल सकता है सर. मैम कोई लो विजन होगा तो उसको लास्ट में नहीं पहले बिठाना पड़ेगा. हाँ, और इसको हम लोग और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्लासरूम डिजाइन को, जैसे हम लोग करते हैं मेरे स्कूल में, हम लोग जैसे बोल सकते हैं. सो वी मेक इट अ पॉइंट दैट द स्टूडेंट रोटेट्स एवरी वीक. जो बच्चे आज इस हफ्ते फर्स्ट बेंच में हैं, वो नेक्स्ट हफ्ते सेकंड बेंच में जाएंगे और लास्ट रो फर्स्ट रो में आएंगे. सो अगेन वो जो हम लोग को डर रहता है लास्ट बेंच में, टीचर जो लास्ट बेंच में बैठे दोस आर नॉट गुड इन स्टडीज, वो जो एक हम लोग का जो माइंड सेट है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. सो दैट इज अ क्लासरूम डिजाइन. Even yes. Ma'am, according to activity also we can change a setup. Yes, Sitting arrangement, no, that is also very helpful for because every time if we will say change setup, so children also takes interest and they also like, because after every activity they get Yes. time to little bit relaxation, and Yes. then they easily involve in activities. Absolutely. Again, classroom design, like how we do is we encourage children to help us so that they have a sense of responsibility. Normally ये normal बच्चों के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, special kids के साथ भी कर सकते हैं. उसका हम लोग responsibility दे सकते हैं. You keep ये वाला कमरा का corner ये आप सजाओ. So that is even that gives a sense of power to them. They has a confidence on what they do. Second is creativity. What is classroom creativity? I know everyone has gone through during their special B.Ed classes, charts करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था. So how creative you are. So what is creativity? क्लास में सिर्फ आपका charts उसको छोड़ के what is creativity in the classroom management? कोई भी आंसर बोल सकते हो. अच्छा, someone said I feel like how you can do it, ma'am. How can you creatively approach management minus making it look like you're imposing rules and regulations and things like that. So how well you make it, and how playful it can be, and at the same time achieving those goals of maintaining class behavior. So what is the one thing that we should keep in mind while working on creativity? Because creativity happens only when there is a basic rules, basic principle. So what is that one feature, one thing that needs to be focused when we are working on creativity? Ma'am, activities such in that children can show their creativity and they can also involve along with teacher. Okay, thank you. Anyone else? I'm looking for a certain word. Let me see if I can get that word. That is innovation. Yes, ma'am. Yes, innovation. Yes. Because without innovation, you cannot be creative. Because सबके पास एक basic rules होता है. हमको class में ये सब करना है. So if you introduce a certain idea to a child, let him or her see उससे क्या नया कुछ आ सकते हैं वहाँ पे. So that is creativity के साथ innovation. Classroom rules. This is one thing that I do it basically is create a rule, like I keep a chart. This is what I do in my class. You can share your experience also. Chart paper, I just write people's name, the student's name, and there is a positive plus and minus. So for every good things, if they are studying, if their handwriting is good, if they are not running around in the class, they get a +5. If they're not doing, they get a -1, not a -5, -1.
Month end mein, I just total it up and then they get a reward or a punishment. But the punishment is absence of reward. They don't get anything. So this is how I do a classroom rule. So I want to hear what do you all do for a classroom rules? Ma'am, initially every day every day, yes, month of the starting we explain what is expectation from children. What I want. That time I never use I don't want this. I am not using negative, like no. I tell, okay, I want this, I like this, like the yeah. And if we prepare golden and black stars, and like you said no just now, so for good behavior we are giving them golden star, and for if there is any negative behavior, so we give them black star, and end of the month we count, and and then we in front of whole school we are giving them some reward. That's great. I use numbers, points, you use stars. Very good. Last is consistency. What is consistency? So the rule that I made maybe in the first week of May should be carried till the last day of May. Sometimes we happen, bachcho ko nahi aa raha hai, so we try to change the rules. That shouldn't be. Sometimes we need to be strict, allowing the children to follow them. इसीलिए हम लोग पहले classroom rules बनाते हैं, sitting with the children कि आपको क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. Then only, so that the rule is same for all. Like we believe in one rule for everyone, same rule for everyone. It cannot be हर बच्चे के लिए अलग से rule होता है. ठीक है? Okay, someone in the group chat mentioned regarding what? Wait, I just forgot. There's so many questions of organizing group activity. How to motivate children to participate? This is a very good question. How to motivate children for participation? Thing is, what we call is two kinds of focus. One is a horizontal focus and one is a vertical focus. What is a horizontal focus? When we are focusing on all the children at the same time. What is a vertical focus? We are only focusing on only one child. That is, अगर limelight होता है तो stage के limelight सिर्फ एक ही बच्चे के ऊपर. That is your vertical. So the child who is not willing to participate, let him sit down in his own seat. Try to make others participate in the group. Make your activities interesting. A child will be tempted to go, maybe not on the first day, but definitely by the third or the fourth session. Any questions apart from that? I participate in token. Okay, I will be reading all those later because I have so many things to share. The 5 R's of a classroom management. Relationship and rapport. If there is no rapport or relationship between the children and the student and the teacher, or even the school management, your classroom management will go for a toss. Second is a routine. What is routine? Routine is not the timetable, school can timetable, social studies, maths, not that. What is a routine? What is routine in class? Please answer. Everyday activities, ma'am. Okay. Your same activities we are doing every day, no? Like first session we more focus on academic, but second half we are focusing on recreational skills like art and craft, sports, music, dance. So many children now knows okay afternoon. So this is the routine. Yeah. So and they follows very well. Yes, the thing is, the more the relationship with the teacher and the rapport is good, the children tend to follow whatever you say. They are bound to follow the routine. The third is room. Why is room an important part of a classroom management? Anyone? The room provides the thing is, those who haven't answered is supposed to answer. इसको लगता है सिर्फ एक ही जन जगे हुए हैं, बाकी सब सो गए. किसी दूसरे कोई बोलिए. Why is room important in classroom management? I see 213 participants. Room important है क्योंकि उसका environment
अलग होता है ना, बाहर का और घर का, और ये सेपरेट होता है, और रूम एकदम रहेगा तो बाहर का नॉइज उन लोग को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उन लोग को काम को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो रैपो भी अच्छा से बिल्डअप होगा, या क्राफ्ट वर्क या डांस कुछ भी हो उसमें वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसलिए रूम बहुत जरूरी होता है। फिर रूम ऐसा भी होना चाहिए कि उसको वो कंफर्टेबल फील करे उसमें बैठने में, उसमें काम करने में। तो जैसे हम लोग काउंसलिंग में भी बोलते हैं कि रूम बहुत जरूरी है, क्योंकि रूम का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है, वहाँ पे डिसिप्लिन रहता है, और वहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बच्चों को फॉलो करना पड़ता है, तो वो लोग सीख जाते हैं व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। गुड, इसीलिए रूम बहुत जरूरी है। वेरी गुड, थैंक यू। मेरा सिर्फ काम है स्लाइड्स दिखाना, आप लोग ही बोल दोगे, मेरा क्या काम है। तो, अच्छा, नेक्स्ट इज रेलेवेंस एंड रिगर। रिगर मतलब रेलेवेंस एंड रिगर, क्लासरूम मैनेजमेंट में रेलेवेंस और रिगर क्या होता है? What is relevance and rigor in classroom? That is the hardship that you are giving to your student. Hardship मतलब क्यों हम लोग hardship देते हैं बच्चों को? So that they come out of their comfort zone. बच्चे बोलेंगे हमको ये नहीं करना है. So sometimes we teachers, educators need to be strict so that it is also a part of the classroom management. Reinforcement, I think आज third day है इस conference का, already दो दिन से हम लोग सुन रहे हैं what is reinforcement. This is again reward and punishment. Now, what is well managed classroom? सबको पता है what is well managed classroom. जहाँ पे rules, routine हम लोग तय करेंगे talking to the children. पहले we need to okay, how many of you follow the checklist of behavior checklist in class? Myself, ma'am. You do? Very good. So normal, yes. So sometimes it's already, what I feel is go with the problem checklist to understand each children better. Classroom, if you're doing a 1:1 session, it's okay. But if you're managing a class, सबके लिए आपको rules बनाना है. So go for a problem checklist. So it's easy for you to jot down plan क्या करना है, how to make them manage. Second is agree on reward and positive reinforcement. It is also already done in house also with the parents, also in school. अगर आप homework नहीं करोगे, what are the rewards you require, what are the punishments you deserve? बच्चों के साथ बैठ के उनको तय करना है. Third is have sanctions for misbehavior. What is misbehavior and हम इसको क्यों रख रहे हैं आपका classroom management में? Any idea why we are keeping misbehavior in classroom management? Sanctions for misbehavior. What are misbehaviors according to children? No answer. Okay. May I answer? Yes. Teacher. Yes. Ma'am, you said no, don't talk. You told us those who don't want. So we are waiting. Somebody should answer. You're behaving like good students, ma'am. Yes, ma'am. This misbehavior will be more of your temper tantrums, bullying, things like that, which will bound to be happening in the class, attacking each other and stuff like that. So having proper sanctions of what is allowed behavior and disallowed in the class. Okay. So that would be a reason. Okay. That would be okay. Again, there was someone waiting to answer. Please answer. What is your intake? What is your thought on sanctions? Ma'am, sometimes we have to give them chance to, like it is a game. Yeah, some we are playing, and some when we are doing some party, and that time if children are doing some misbehavior, so it is okay. But every time, so what is the difference between misbehavior and good behavior? What is? So that is a miss. So that time, if they are teasing each other, yeah, so we allow that. Absolutely. Actually, this is what I wanted to hear. जब हम लोग पार्टी कर रहे, फ्री टाइम कर रहे, स्पोर्ट्स टाइम कर रहे, we are supposed to do some because they are children. अगर वो लोग एकदम सही से उसका behavior है, so where is the fun element? There will be missing on fun.
So अगर फन नहीं होगा तो चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेन दे आर लुकिंग डाउन बैक टू देयर लाइफ कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं होगा. So that is the reason we allow misbehavior under certain condition. वो भी बच्चों के साथ बैठ के हमको रूटीन करना है, लिख के रखना है. If you are doing this during a party time, it is allowed. क्लास में you cannot hit each other. Normally आप किसी का ऐसे धक्का नहीं दे सकते, पर games में you are allowed to do. This is the point. Next is have a selection of opinions of disciplinary problem. Same thing. पहले बच्चों को लेके बैठ के just write it down. अगर आप ये कर रहे हो तो आपके साथ ये हो सकता है, ये होगा ही नहीं, ये हो सकता है. Make use of their physical space. What is physical space? कोई भी बोल सकते हैं. Signal is very weak, sometimes stucking. Is it my signal? Is it my PPT is getting stuck? Please answer by unmuting yourself. फिजिकल स्पेस में इसमें डेली जो पीटी करता है, कोई सुबह जाकर योगा कराता है क्लास शुरू होने के पहले. If you making use of physical space का मतलब क्या होता है? वो तो हो गया आपका physical activities. आप जो बोल रहे हो वो physical activities में चले जा रहे हैं. What is physical space? बोलो. हाँ. Physical space, classroom, playground, etc. Okay. Why is physical space important? हेलो मैम. Yes. फिजिकल जो स्पेस वो बच्चों को देना पड़ता है, अदरवाइज उसका जो इंस्टिंक्ट है, उसका जो अंदर का जो एबिलिटी है वो कैसे निकल बाहर आएगा उभर के. तो इसके लिए देना पड़ता है. और स्कूल में भी जैसे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और स्पेशल स्कूल में हूँ, तो हम लोग बच्चों को आफ्टर टिफिन के बाद थोड़ा 1 घंटा के लिए सब बच्चों को एक साथ छोड़ देते थे कि वो अपना ओन टाइम, अपना ओन सब कुछ शेयर करे दूसरे बच्चों के साथ, तो वो लोग खुद सीख पाएगा या कुछ अगर अच्छा चीज वो एडप्ट कर पाएगा और अपना एबिलिटी वो समझ पाएगा कि मैं ये कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक्टिव हूँ, तो दूसरों को मैं सिखाऊं. जो डांस करता है वो बता जाओ हम सिखा रहे हैं. तो ऐसे उन लोग जैसे उन लोग के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हो जाता है. They try to make use of the space. They are trying to be confident. वो लोग सिखाने की कोशिश करते दूसरे बच्चों को भी. ठीक है. सिग्नल का प्रॉब्लम है? नो मैम. अच्छा, सुना दे रहे ना. ठीक है. अचानक सब इतना शांत हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया. वो म्यूट कर दिए थे मुझे, मैं बोल रही थी लेकिन म्यूट हो गया था इसीलिए. ठीक है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज एनकरेज रेस्पेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? Out of 225 participants, I want others also to speak. यहाँ पे इस नॉन जजमेंटल प्लेस. गलत है सही है सिर्फ बोल दो जो भी. Ma'am, based on sharing and caring, sometimes relationship become positive or negative. Yes, absolutely. How many of you agree with negative relationships? होता है, स्कूल में होता है, बच्चों के साथ होता है. How many of you agree to it? Yes ma'am, I am agree. Yes ma'am, it happens. Yeah, it happens. And what are the things you do when certain negative relationships do develop in the school or in the classroom? क्या करते हो आप लोग जब नेगेटिव रिलेशनशिप्स हो जाता है क्लास में? Peaceful negotiation and mediating, ma'am, between the children. Yes. Normally जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जब नेगेटिव रिलेशनशिप्स होता है in school between children or between children and teacher, do you think it's wise to call the parents and discuss with them? मैम, इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी. हाँ जरूर. हाँ, यस. एक्चुअली क्या हो जाता है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ एंड उसके साथ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ. तो हाँ, तो लेकिन मेरे को ज्यादा मौका नहीं मिलता है स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए. लेकिन जब मैं नॉर्मल स्कूल में जाती हूँ, नॉर्मल इन द सेंस ज्यादातर नॉर्मल बच्चे रहते हैं, उसके साथ स्पेशल चिल्ड्रन जब मैं देखती हूँ तो उन लोगों को देखती हूँ कि जो बच्चा डिसेबल्ड है या
तो कोई दूसरा उनको क्या बोलते हैं ना हर्ट किया है, तो टीचर मेरे को पास आकर के बोलते हैं कि मैम वी वांट टू कॉल हिज और हर गार्जियन। तो लेकिन मैं उनको यही सलाह दी थी कि नहीं, पहले बच्चे के साथ आप बात कीजिए, क्योंकि उनका मन में अगर कुछ चल रहा है या तो उसको पहला दिन कुछ बच्चे ने उनको भी हर्ट किया है, तो देन तो बाद में मेरे को ऐसा लगा था मैम कि আমার এটা পরে মনে হয়েছিল যে সমস্ত টিচারদের এটা করা উচিত যে প্রথমেই গার্জিয়ান কল না করে ওই স্টুডেন্টটা কি বলতে চাইছে ইন্ডিভিজুয়ালি ওই এক্স্যাক্টলি, নালে কি হয় বাচ্চাদের মধ্যে একটা ভয় থাকে কোনদিন the person is not going to open up, সে জানে কিছু করলেই মা বাবা আসবে, আমাকে বকবে, আমাকে মারবে। একদম ওর যে নিজের যে পার্সোনাল স্পেসটাই তৈরি হয় না, যার ফলে ম্যাম মানে সেটা যে কোনো বাচ্চা হতে পারে, আমি আলাদা করে কোনো বাচ্চার কথা বলবো না, এখানে সব বাচ্চা সমান। তো এইটা আমার একদম থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ এটা থ্যাংক ইউ, আপনি একটু শেয়ার করলেন। কি গান গায় কিছু I think people understood like it's not wise to call the parents in the first go, because it creates a fear in the child that they may not open up in future. So best is talk to the child one-to-one. Then if things are not going in place, then call the parents, maybe in the second or in the third session, not in the first session. Thank you. Again, the 3 dimensions of a classroom behavior: personality, teaching, and discipline. Personality of the teacher that can be helped on the teaching and discipline. Again, these are already been explained. If anyone wants to know more, please ask, because for the last 2 days we are discussing on these 3 aspects. Moving to the next rule, I think there are not 10 slides done. Okay, rules. Now we'll go with each and every aspects of a classroom management. Is rules, how rules are to be created, who is creating the rule, what is a regular rule, what is an irregular rule. And I'm only going through the pointers because all of us are special educators or just students, so we know how to work with it. Any questions, please ask me. First is write rules in a very positive manner and keep it in the classroom on a written or maybe on a chart paper. Do not use negative words like don'ts. It's always with a positive affirmation. Write your rules. Again, do not restrict child under any kind of circumstances. They give directions, like the example that I've given is be good or don't do this. Like there's a classical example, like I came across it, it's my personal experience. I told a child in my school, tumi lokhi hoye bosho. So according to the Hindu almanac, Lakshmi is supposed to be very poised. So I told the child, lokhi hoye bosho. So the child said, ma'am, lokhi to edik odik ma to bole lokhi khub shanto nai, jekhane taka thake sekhane doure, ami ki tai dৌড়বো? So it means like the Lakshmi is not good. That the character of Lakshmi as depicted in the mythology, it doesn't sound, it is very poised, it sits down in a one place and is focused. So when you're using certain kind of terms, don't use vague terms. Like good can be good, what is good for me can be bad for you. So do not use certain terms like good, proper, improper. Next is discipline the class rules and overgo with the children. Repeat the same rules again and again before every class. Every day, repeat so that the person understands it. Like the way we used to do rote learning, it gets to our system. Next is check children's understanding of the rules. You can just ask, pick up anyone, tell them, is rule ka matlab kya hai? See how the child understands it. Explain the rationale behind the rules. Normally, what Indian system is about parenting, about behavior is, we tell them do this and don't do that. We never give them an explanation. Isko kyun karna hai, kyun nahi karna hai. So that is the reason some children are so inquisitive. They want to know each and everything. Isko kyun follow karna hai, isko kyun nahi follow karna hai. Better give them an understanding. Isko kyun kar rahe and what is the purpose of this rule. Be consistent in enforcing the outcome. Like I said, again, rules, punishment, reward, praising. Routine, again,
Why is routine required? To minimize a behavioral change. Suppose a child is having some maladaptive behavior, we put them on. It's not only about child, it's about everyone. Those who are having maladaptive behaviors, we put them under certain rules and regulation that we are calling here as routines. Again, what are the features of routines? Display in the classroom, display the routine, ask the children or the students to read them over and over. Check whether the children have understood the meaning of the routine. Again, explain the reason why you have asked them to do. Be consistent. Maybe the first 2 days you are consistent, you are strict. If you're saying that the child is repeating the same behavior again and again, don't lose hope. Be strict on you. Next is your praise. Sorry. Next is your praise. How many of you use praise in classroom? Sorry. मैं तो बहुत करती हूँ मैम, क्योंकि प्रेज मेन चीज है जो मैं भी फील करती हूँ। अगर मैं कुछ काम करती हूँ या खाना बनाती हूँ, किसी को पढ़ाती हूँ, अगर वो लोग मुझे अगर पढ़ाने से वो अच्छा रिजल्ट लेके आता है या वो मुझे आंसर ठीक से दे पाते, तो मैं खुश हो जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि और अच्छा से पढ़ाए। तो बच्चे लोग के लिए भी तो ऐसा ही है। वो अगर 10 स्पेलिंग में से 5 भी ठीक करे, तब हम बोलते हैं बहुत अच्छा, आपने 5 ठीक कर लिया, चलो 5 मिनट और पढ़ लेंगे तो 10 ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग क्लैप करेंगे या फ्लावर क्लैपिंग करेंगे। तो ऐसे बोलने से वो लोग एकदम एनर्जी से फिर से पढ़ के पूरा ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर मैं डांट दे दूंगी ना, तो उसको खराब लगेगा, बुरा लगेगा, वो सोचेगा कि उससे कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे घर में बोलते तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रेज करें तो वो और आगे जाना चाहते हैं और अच्छा से करना मांगता है और टीचर को खुश करना मांगते हैं। तो मैं तो बहुत यूज करती हूँ, बहुत अपने काम में। आपको छोड़ के बाकी की 225 पार्टिसिपेंट से कोई और? मैम, हाँ मैम, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, अगर ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स हम लोग उसमें लिख सकती है। उसके साथ साथ उस रूल को फॉलो करने के बाद हम लोग क्या रिवार्ड उनको दे सकती है, ये भी साथ में एक पिक्टोरियल होगा ये। और उसके साथ साथ एक जो पनिशमेंट होगा वो भी पिक्टोरियल होगा। हाँ, no, obviously, because children do not understand written language. स्पेशल चाइल्ड जितना एक पिक्टोरियल में जितना इफेक्ट होगा, इफ यू आर गिविंग अ चॉकलेट, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर आपके हाथ में एक स्केल का डंडा दिखा रहे हो, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इफ यू आर सेइंग आई विल बीट यू विद दिस रूलर, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। So it's always better for even for children, even for us, even for adults. Pictorial is the best thing because it helps us in remembering things. अगर आप देखो कि जो नॉर्मल लोग जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, they create timetables and write. टेबल फॉर्मेट में लोग पढ़ते हैं, क्यों? It's easy to remember pictures than written documents. ठीक है, तो प्रेज दो तरफ के होता है, एक होता है स्कूल क्लास टीचर जो प्रेज कर रहे हैं, और एक होता है पीयर प्रेज। पीयर प्रेज मतलब जो क्लास के बच्चे जब उसको प्रेज करते हैं। कितने जन क्लास में पीयर प्रेज करवाते हैं आप लोग क्लास में? We are doing, ma'am. You started doing? Very good. Because if many times we are keeping small activities, no, in a class, like game, and if अगर कोई बच्चा उसमें विन करता है, तो किसी और बच्चे को बोल देते हैं कि आप उसको चॉकलेट दो या आप उसको गिफ्ट दो। तो इस तरह से बच्चे को जिसका ये टर्न होता है, दे फील वेरी नाइस, में प्रिविलेज लगता है कि अच्छा ये चांस मुझे दिया मैं। एंड दे वेरी, बिकॉज माय स्कूल इज अ स्पेशल स्कूल, PWID, so there are not other regular children. So and just now you said, no, आपने बताया कि बच्चे गुस्सा होते, स्पेशल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा देर एक दूसरे से गुस्सा नहीं होते हैं। हाँ, इमीडिएटली हमको बताया, अगर बोल दिया ना उनको, नहीं देखो उसने ऐसे किया लेकिन लास्ट टाइम आपको हेल्प भी किया था ना उसने, ये भी, तो इमीडिएटली वो एक दूसरे को हक करते हैं, दे एंजॉय। तो ये
स्पेशल जो हमारे ये है उसमें ये नहीं होता है मैक्सिमम, वो ज्यादा देर तक एक दूसरे से गुस्सा नहीं रहते, नॉट इवन हाँ, बट इट इज डिपेंड्स ऑन फंक्शन, हाँ हाई फंक्शनिंग आप डील कर रहे हो उसके ऊपर ये होता है। हाँ डिपेंड करता है। हाँ नहीं, जो हम लोग करते हैं, हम लोग के स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, अगर मानो स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल है तो नॉर्मल बच्चे जो एक गेम्स खेल रहे हैं तो गेम्स में एक बच्चा विन किए तो उसको हम लोग क्लैप करेंगे। अगर कुछ रिवॉर्ड्स देना है, मानो पेंसिल देना है या शार्पनर देना है, जो क्लास में अच्छा नहीं किए हम लोग उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं आप उसको दो, ताकि दैट पर्सन डजंट फील बैड आई एम लेफ्ट आउट। सब उनके प्रेस कर रहे, उसका नाम जो लास्ट आया है फ्लैट रेस में, तो हम लोग उसको भी बुलाते, माइक में अनाउंस करते, आप उसको रिवॉर्ड दो, तो उसका भी हैज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। देखो मेरा नाम भी माइक में आया, क्लास के सामने आया, मेरा आई एम आल्सो गोइंग टू द बोर्ड टू गिव हिम द प्राइज। सो किसी को भी ये नहीं लगता है कि आई एम लेफ्ट अलोन। दैट इज ऑल। रिवॉर्ड सबको पता है व्हाट इज रिवॉर्ड, 2 दिन से हम लोग यही कर रहे हैं व्हाट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सो व्हाट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड जो हम लोग फोकस करने वाले हैं। वन इज एन इमीडिएट रिवॉर्ड, अभी क्लास में बच्चा सही किए, अभी अभी तुरंत हम लोग उसको रिवॉर्ड देते। इमीडिएट रिवॉर्ड कैन बी क्लैपिंग, क्लैप कर दो, उसको टीचर के डेस्क के पास में बिठा दो। कंसिस्टेंट, एक ही रिवॉर्ड जो हर हफ्ते हर साल देते जा रहे, मे बी क्लास में अच्छा रिजल्ट किए तो मंथ एंड में मिलेगा उसको, इमीडिएट नहीं मिल रहा है, या ईयर एंड में मिलेगा, सेशन एंड में मिलेगा, दैट इज कंसिस्टेंट। अचीवेबल, जब हम लोग कुछ बिहेवियर मैनेज करवा रहे बच्चों को, when you are trying to make maladaptive behavior change, we give them a reward. If you are going to do this by the end of this month, you will be getting this reward. तो हम लोग फिर से उनको बोल देते। फेयर इज चिल्ड्रन को, बच्चों को हम लोग बोल देते रिवॉर्ड। अब बच्चों को जब आप बोलोगे यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, मे बी 1 महीने में, sometimes they manipulate, they don't do it, so you need to keep a look जो change हो रहा है that's a fair change, वो manipulative नहीं कर रहे। example of rewards, tokens हम लोग देते हैं। special day, कितने जन special day मनाते हैं आप लोग as a reward apart from birthday? कोई मनाते हैं स्कूल में? जैसे कि टिफिन में लंच, उन लोगों को लंच टाइम में बोला जाता है कि आज टिफिन मत लाना, आप लोग को जो मर्जी होगा, आप मतलब टीचर जाते हैं शॉप में उन लोग के साथ, तो आप लोग वहां से खरीद के लाना और खुद बनाना, टीचर लोग हेल्प करते हैं बनाना और खुद खाना, सब मिलके एक साथ बच्चे लोग। तो ऐसे रिवॉर्ड है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग दुकान जा गए, खुद खरीदा, ये चीज चाहिए खुद खरीदा, आने के बाद खुद बोले कि ऐसे ऐसे बनाना है, तो वो लोग को हेल्प करते हैं। हम लोग इंडक्शन में ऑफकोर्स बनाते हैं, तो वो बना और सब मिलके बांट के खाया एक साथ, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो उसके लिए वो लोग ना जो भी बोलते हैं, पढ़ाई करना, काम करना, वो लोग सब मानते हैं, क्योंकि ऐसा उन लोग को खुश, मतलब थोड़ा अपना तरीके से चलने का मौका मिलता है उन लोगों को। सर्टिफिकेट्स, कितने जन सर्टिफिकेट्स देते हो? हम तो देते हैं सर्टिफिकेट्स। अभी इतना सारा ऐप आ गया, कैनवा से सर्टिफिकेट बनाते हैं, बच्चों का नाम लिखते हैं, प्रिंट आउट करके दे देते हैं। आप लोग कितने जन सर्टिफिकेट्स देते हो एज अ रिवॉर्ड? मैम ये सर्टिफिकेट्स तो नहीं देते हैं, बट एंड ऑफ द ईयर जैसे हमारा एनुअल फंक्शन होता है, तो उस टाइम हर क्लास से बेस्ट स्टूडेंट ये निकलता है, तो उस टाइम बच्चों को कुछ अमाउंट मिलता है और उसके साथ साथ अवार्ड, ये सर्टिफिकेट मिलता है। और इन बिटवीन जो स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं, वहां से वो आ जाता है। लेकिन ऐसे जो स्कूल में होते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं, गिफ्ट वगैरह मिलता है, टोकन मिलता है, ऐसे प्राइजेस मिलते हैं, दैट वी आर गिविंग। अच्छा, फ्री टाइम कितने श्योर प्लीज आस्क। हेलो मैम, वो जो स्पेशल डे लिखा है ना मैम, उधर में शायद क्रिसमस का एक्टिविटी और दिवाली का एक्टिविटी नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये है एग्जाम्पल ऑफ रिवॉर्ड। एक बच्चा ने कुछ हासिल किए, उसको हम लोग स्पेशल डे, जो लोग हम लोग करते उस डे, मानो हम जो एग्जाम्पल मेरे स्कूल से दे रहे हैं आपको, स्कूल के बच्चे आज जो बिहेवियर हम लोग को चाहिए था वो किए। एक क्लास में उसका टेस्ट था, स्पेलिंग टेस्ट,
10 में वो उसको 8 सही आया। सो स्पेशल डेज अगले दिन वो बोलते क्लास में इसको क्या करना है, सो इट्स अ स्पेशल डे फॉर हिम, सिर्फ उनके लिए स्पेशल डे है। ही इज इन चार्ज ऑफ द क्लास, जैसे ही इज द सेकंड टीचर, वो तय करते हैं किसको कहाँ बैठना है, उसको तय करना है कल उसके दोस्त को क्या टिफिन लाएगा, तो इट्स अ डे ओनली फॉर हिम और हर। इट्स अ स्पेशल डे सिर्फ एक जन के लिए, बाकी पूरे क्लास के लिए नहीं। आप जो बोल रहे हो दिवाली क्रिसमस, दैट इज एंटायर फॉर द क्लास, पूरा क्लास के लिए हो रहा है, सिर्फ एक जन के लिए नहीं। समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? वरना फिर से बोल देंगे पीयर प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट इज योर फ्री टाइम। क्लास में अगर बच्चे कुछ एज अ रिवॉर्ड उसको उस टाइम माना हाफ एन आवर 45 मिनट्स उसको कुछ काम नहीं, उसका फ्री टाइम, वो खेल सकते, सो सकते, कुछ भी कर सकते। एक क्लास नॉर्मली हम लोग जो करते, जो पीटी क्लास होता है, हम लोग उसको फ्री टाइम दे देते। उस एक दिन, हफ्ते में एक दिन उसको पीटी नहीं करके उसको जो मर्जी है म्यूजिक क्लास जा सकते, म्यूजिक रूम में बैठ सकते, उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली जो नॉर्मल स्कूल में होता है एज अ मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, उसको एक हफ्ते के लिए मॉनिटर बना देते हैं। क्लास सेलिब्रेशन, अगर क्लास इकट्ठी कुछ चीज हासिल की है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फन फ्राइडे, हम लोग के स्कूल में ज्यादा फन फ्राइडे ही होता है क्योंकि वीकेंड के साथ पहले होता है, तो फन फ्राइडे ज्यादा होता है। मैं पकड़ते रुको। हाँ, सब सामान एक साथ कैसे पकड़ोगे? मेरे साथ। अच्छा, स्टिकर, लकी डिप एंड एक्स्ट्रा प्ले। बच्चे लोग एक्स्ट्रा, नॉर्मली मेरे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्स्ट्रा प्ले के ऊपर फोकस करते हैं। उनको क्लास नहीं करना है, उसको बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेलना है। सो दैट इज द रीजन दे ऑलवेज वांट टू अचीव द डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम लकी डिप व्हाट इज दैट? लकी डिप होता है हम लोग का, जैसे लॉटरी होता है ना, तो एक बड़ा सा बोल में हम लोग चिट्स रखते हैं, वहां पे लिखते हैं एक पेंसिल, तो जो भी वो डिप से निकलेगा उसका रिवॉर्ड होगा। जो एक चॉकलेट होता है, पेंसिल होता है, क्रेयॉन का सेट आता है, तो वो जैसे डिप निकालते हैं ना, तो एक जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिप्स निकालते हैं, तो ऐसे होता है। तो चिप्स में हम लोग लिख देते हैं, जो जैसे चिप्स का पैकेट, उसके बाद एक बिस्किट का पैकेट लिख देते, तो एक एक करके उसको मिल जाते। उसी दिन नहीं मिलते, अगले दिन मिलते उसको। अच्छा, हमारे यहाँ पे वो रिवॉर्ड व्हील है। अच्छा, तो वो घुमा देंगे, तो जिसमें उसके जो फेवरेट आएगा, या तो चाइल्ड कैन से ओके आई वांट सो एंड सो थिंग, अदरवाइज उसको अलाउ करते कि आपको ये करके। सो इन दैट वी इनकॉर्पोरेट फ्री प्ले, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, देन प्ले विथ टॉयज, गोइंग टू विजिट टू शॉप। सो ये सब वो व्हील में डाल देते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट सेम है। एक नाम, जैसे पानी, कोई इसको वाटर बोलते, किसको इसको तन्नी बोलते, चीज तो एक ही है। स्पेशल एजुकेशन या बच्चे क्लासरूम मैनेजमेंट में सब तो सेम है, शायद एक एक जगह पे एक एक नाम से हम लोग बोलते हैं उसको। लास्ट सेशन इज योर मॉडल आइडियल बिहेवियर। ये सिर्फ टीचर्स लोग के लिए, ये बच्चे लोग के लिए नहीं है। यूज पोलाइट लैंग्वेज, क्योंकि आई अंडरस्टैंड स्पेशल, जो लोग स्पेशल एजुकेटर है, कभी कभार उन लोग का भी एंगर एग्रेशन ज्यादा हो जाता है, एक ही चीज बार बार दोहराते हुए। So you need to understand, have a very polite language, verbal language and even body language. लैंग्वेज मतलब सिर्फ जो बोलते हैं वो वाला नहीं, सब नॉन वर्बल लैंग्वेज में भी पोलाइट होना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट। नॉर्मली जो लोग ऑटिस्ट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ऑटिस्ट बच्चे डू नॉट मेंटेन एन आई कांटेक्ट, फर्स्ट रूल होता है। सो इवन दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक एन आई कांटेक्ट, आपको जबरदस्ती आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा। कैसे? उन लोग वो जिस तरफ देख रहे हैं उसी तरफ देखो। जो लोग हम लोग बोलते हैं मिररिंग टेंडेंसी, जो बच्चे जो कर रहे हैं वो ही आप करो, करते करते बच्चा आपको फॉलो करना शुरू करेगा। इस कीप फोन्स इन योर पॉकेट्स और इन योर बैग। अगर हम लोग किसी एक एडेप्टिव बिहेवियर को सिखाना चाहते हैं, फोन्स, टैब, जो जितना भी गैजेट है, इधर आपका कबर्ड में, स्टाफ रूम में, या आपके पॉकेट में, या आपके बैग में। लेट वन अनदर स्पीक अनइंटरप्टेड। जब भी कुछ किसी को बोलना है, हाथ ऊपर रखो, बोलो, उसके बाद खत्म। एक साथ 3-4 जन एक साथ बात नहीं करेंगे। इवन जब बच्चों भी बोल रहे, टीचर भी बोल रहे, एक साथ नहीं होगा, किसी एक को।
जिस क्लासरूम में एक साथ 2-3 टीचर्स रहते हैं स्पेशल स्कूल में, उसी वहां पे भी सेम रूल्स एक एक करके बात करना है. रेज कंसर्न अबाउट वन अदर स्टेटमेंट इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर. अगर आपको लगता है कुछ चीज अलग से बच्चे के साथ डिस्कस करना है, उसको अलग से बुलाइए, सबके सामने डिस्कस मत कीजिए, फुल क्लास के सामने डिस्कस मत कीजिए. क्यों नहीं करना है फुल क्लास के सामने डिस्कस? लास्ट क्वेश्चन. क्यों मैम इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी जरूरी है, क्योंकि हाँ उनको इमोशन को पकड़ने के लिए उनके साथ इंडिविजुअली बातें करते हैं, तो एक्चुअली उनके साथ एक जो फ्रीक्वेंसी माने इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी इंटरनल जो कनेक्शन होता है वो बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी होता है. वेरी गुड. और किसी कुछ बोलना है? हाँ, मुझे कुछ बोलना है. अलग से इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे में क्या खामियां है, क्या क्या खराबियां है, वो सब बच्चों को क्यों बताए. उसको अलग से बता के समझा के वो रेक्टिफाई करना है. मुझे तो क्या करना है एक्चुअली, बच्चा का वो बिहेवियर रेक्टिफाई करना है, ना कि दूसरे बच्चे को उसको खामियां के बारे में बताना है. तो दूसरा बच्चा भी तो इसको इमिटेट करके सीख सकते हैं उसके सामने. अगर हम बोलेंगे तो उसको पता नहीं है, और स्पेशल बच्चे लोग तो दूसरों को इमिटेट करके सीखते, तो ये बच्चों को देख के वो दूसरा बच्चा भी सीख जाएगा. इसीलिए हम लोगों को उसको अकेले लेके वो मॉडिफाई करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए. तो फिर दूसरे बच्चे भी हार्मलेस रहेगा, और ये बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ जाके फिर से एक साथ खेल पाएगा. कोई उसको बुलिंग नहीं करेगा कि तुम्हारा ये है वो है, टीचर तुमको डांटा है, सब नहीं बोल पाएगा. तो इसीलिए अलग से करना चाहिए हम लोग को. वेरी गुड, थैंक यू. इससे मेरा पीपीटी से टाइम फॉर क्वेश्चंस. किसी को कुछ पूछना है? हम एक बार चैट बॉक्स देख लेते. किसी को कुछ टू गिव रिस्पेक्ट, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, एब्सोल्युटली, बिकॉज some teachers, not to hurt anyone's feeling, some teachers do not respect the confidentiality. पूरा क्लास के सामने बोल देते, आप तुमने ये किए, आपने ये किए थे. That is not a good approach. Any questions to give? और किसी को कुछ पूछना है? मैम हाँ, একটা ছোট্ট জিনিস বলার ছিল. আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তখন একটা স্কুলে দেখতাম ক্লাস 6-7 আমাদের একজন টিচার ছিলেন, উনি যেটা একটা খেলা খেলাতেন কি যে উনি একটা ক্লাসকে ইমিটেট করতে দিতেন, যে আমার এই ক্লাসের পরে 10টা মিনিট তোমরা সময় পাবে, তোমরা নিজেদের মতন করে একটা ক্লাসরুম সাজাও. এবারে প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা জনের দায়িত্ব থাকতো. ধরুন আজকে আমি পেলাম যে আজকে আমি ক্লাস টিচার, আমি বাকিদেরকে পড়াবো. আবার নেক্সট ডে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলেন, সে ক্লাস টিচার, সে অন্য আরো 10 জনকে পড়াবে. তো এটাতে কি হতো যে অন্য কোনো টিচারের যদি আমাদের কোনো রাগ থাকতো বা অন্য টিচারের কোনো জিনিসটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ম্যাম. এটা খুব ভালো. এবার যেটা what we say is like leaderships are trait, it's a trait. কিছু লোকের মধ্যে সেটা থাকে, what is the leadership? Teachers are same like that. কারণ every person has a teaching ability. With time, with practice, we go to a better position. সবার মধ্যে টিচার আছে. আমরা কি করি, যেমন my teacher was teaching me, I like that technique, I implement it with my students right now. Same with others. আপনাদের যেটা ভালো লেগেছে সেটা এখন আপনাদের স্টুডেন্টকে করাচ্ছেন. যেটা ভালো লাগেনি, আপনার ম্যাথস টিচার যেভাবে আপনাকে বকতো, আপনার সেটা হয়তো কোথাও ডিপ ডাউন সাবকনশিয়াসে হিট করেছে, এখন সেভাবে আপনি বাচ্চাদের বকছেন না. So basically it's again a permutation combination of all the people we meet in an entire life. That is how we show it on a profession. Thank you ma'am. Thank you so much everyone for helping me with your answers, and thank you for having it an interactive session, because post lunch sessions are too tiring and too sleepy even for me. Okay, I'm done. Yes, thank you ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you ma'am. Thank you so much. Please be there. There is, I think, thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Yes, I think someone wrote please speak in Hindi at least. I was speaking in Hindi, right? Thank you ma'am. Thank you. Please be online. The last session is going to start right away. Let me just introduce you to Dr. M.A. Khalid, who has been working for more than 40 years in the field of management and academic field as faculty of MBA and EMBA program in a reputed university in Bangladesh. Apart from this, he is practicing consultant psychologist since
2002. Dr. Khalid has organized lots of international conferences, seminars, workshops since long, and he's also a management trainer. I now ask sir to please come and share your thoughts. Khalid, are you there? Okay, yeah, I'm there. Okay, so Mr. Basu, thank you very much that you introduced me. And I think I am also well aware. And also, they know me very, might be, few others may not be known to them. So anyway, however, today, let's please start. Wait, sir. I can't. Not. Okay. So I can do myself if not possible by you. Yes, just give me 1 moment. I'm not sure why my Zoom is not connecting to the PPT. Just 1 moment. Return to meeting. Oh, sorry. I think I left the meeting. Okay, it's okay. It's okay. Okay, Very thank you. good. Just keep it until unless if you, Okay. I tell you to next slide, you don't do it that. Okay, sir. Okay. Today I'm going to speak behavior modification. Gradually, I'll discuss very slowly to understand. कभी-कभी हिंदी में बोलेगा, कभी-कभी I'll speak in Bengali. Behavior modification. आचार आचरण की किभाबे modify, कैसे हम modify करना है? सब क्या technique है? Which are those techniques to increase desired behavior? That is, desired behavior means to a certain level. To a certain level at special school and home. Again, I repeat कर रहा behavior modification कैसे change करना है, क्या technique है इसमें to increase desirable behavior. हमको क्या चाहिए, उसका कितना तक, तो हम desirable behavior का बोलेगा certain level at special school में और घर में. So behavior modification techniques to increase desirable behavior at school and children at home. Next slide, please. Yes, sir. Okay. So this is not only important, this is very, very important. I know the special schools, they will have definitely intellectually disabled, different kinds of disabilities. But how to mold them? How to mold them into normal, at least certain level? How to? That's the technique. I will discuss few points and you must share with me. Time to time you ask me, I will stop it and ask you something what you understand. Just interact with me so that will be more beneficial for everyone. So behavior understanding of behavior modification. So उसके क्या बोलते हैं modification को? क्या? Behavior using positive and negative consequences. Is using positive and negative consequences to shape your child's behavior. Positive हो तो negative हो तो जो consequence है उसका हम अपना shape में लाना. Shape means to a certain level. To normalize their behavior as far as possible. So when a child makes a good choice, a child should be rewarded. अगर वो कोई choice किया अच्छा, even though you appreciate, always think appreciations सबको भी अच्छा लगेगा. हमको भी बोला sir you did a very good job, हमको भी अच्छा लगेगा. किसी को भी बोलिए, parents को बोलिए, home में बोलिए, student के बोलिए, बड़ा को बोलिए, it's always in a positive vibes. Definitely that will reflect much more than to the disabled child. Good choice kiya, this is very good, both acha, and rewarded. What you will reward it? At least you greet him or her. Okay, very good, excellent. अपना दिल से बोलिए. ऐसा कुछ excellent किया, बहुत अच्छा काम किया. It is not a talk at all. I don't appreciate that one. Oh, very good. What do you mean by very good? Oh, you did a very good job. Excellent, excellent. I appreciate you. That's the way of talking with the child. Even child, adult, adolescent. Okay. Positively informed, and when the child makes a poor choice, then they receive a negative consequence to learn from their behavior and help to modify it. अगर कोई कुछ negative choice किया, ऐसा कोई which is not
to the normal level. So ऐसा मत बोलिए बहुत खराब थे. No. Oh, you did a good job. It could be much more better. अपने language से बोलिए. You can speak in Bengali. You can speak in English. You can speak in Hindi. There should not be any communication variables. Most important is that. This is the most important. We have to think. We are communicating to this child. If she or he is speaking in Hindi paper, okay. Bengali, okay. English, okay. Doesn't matter. When you communicate internationally, that must be maybe a priority in English, then Hindi or Bengali, whatever the things. You can use any language. So negative consequence to learn from their behavior and help modify it. Okay, very good, very good. But yeah, like this, you see, this should be better. Oh, I see. This is better. Okay. At least she or he will greet. Okay. Always in a pleasant mood. You might have a lot of problem at home. You might have a lot of problem at school. You are now facing with something. Forget about all these things. We think what is to done currently. What is my current assignment? What is my present situation to be adapted? ऐसा कुछ सोचे हम क्या करना है अभी? We are problem. We are facing a lot of problem. But whenever talk with a special child, एज का तरह जस्ट कंसीडर कीजिए उसका एज कितना है, ऐसा तरह बात कीजिए. जस्ट कंसीडर द एज, कंसीडर द जेंडर. समटाइम्स somebody is shy, somebody is extroverted, introverted. एज कम होने से उसका और नजदीक जाइए. Go to him or her nearby, not from far away. Just near to his or her sitting positions. Next. Yes, sir. Before I go to the next slide, can you just increase your volume of the mic? Because some participants are unable to hear you. Oh my God. Let me check. Yes, please check, sir. Thank you. I don't know. Okay, I'll keep it. Maybe like this. This will be better, I think. Maybe I have not that much idea about the computer anyway. So can you hear me now? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, clear. Yes, Very sir. good. Very good. Okay, don't hesitate to say me. Directly you speak. Sir, we cannot hear you. Doesn't matter because I'm working for the development of child in disability cases. I'm trying. And I want to express as per my last previous experiences. Anyway, it will come to behavior modification is my chapter. So, but how to use behavior modifications? Several key steps to be बहुत से तरीका है उसमें. Adapting child's environment. They want to change and make the right choices. हम पहले से बोला उसका मतलब है adapting child's environment. उसका environment कैसा है, उसका age कैसा है, उसका gender कैसा है, ये सब consider करके the right choices. They want to change and make the right choices. उसके देखिए उस लड़की जो है उसको पकड़ लिया इधर में. This is we call symbolic representation, which is nowadays very important. Symbolic, just to see the attitude with this child. So उसको पकड़ के क्या ना क्या बोल रहा है. So see the child's smiling face, both of them. I know you people are very much aware of this. You are adapting, but awareness session always give you positive impact. इसका मतलब हम सब जानता तो जरूर, मगर we have to aware practicing. That's why we call practicing psychology. इसका मतलब practice करते अपना efficiency. It is a continuous learning. Improvement is a continuous learning. It's a continuous process. The next, Swa. Yes, sir. Just 1 minute. Just wait. अच्छा, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए. अभी 1-2 स्लाइड पे चला गया, बोलिए. अगर हाँ ना बोलिए, because we have the last session. उसके बाद आदमी लोग they will come some summarize the program. I will also. So if you ask any questions, please ask me time to time.
Sir, yesterday and today also many things are covered already. बहुत सारा cover हो जाए. Yeah. What today were already discussed, right? Yes, sir. Sir, continue, sir, continue. Yeah, that will be okay. Explanation and expression might be differs. Some point you will find from each and every speaker. Not similar because we are not talking each other to. So a lot of differences, lot of thoughts and ideas will share individual speakers. So behavior modifications, that's a consistency. क्या बोलते हैं consistency? Consistency like this. Kids learn to recognize what they are doing is either positive or negative. क्या करना है उसको? Kids का सीखे कि recognize करे what they are doing either positive করছি না negative কি করে? How they recognize this one? By your face, by your attitude, by your talking, by your explanation, by your expressions. They will know, oh, I am doing good. So they will recognize this and they will be excited. When child has trouble sharing, each time they share, you give them positive praise and attention for their choice, this choice. कभी कभी वो लोग प्रॉब्लम भी फेस करना कोनो समय प्रॉब्लम फेस करे they share, you give them positive praise, positive attention for their choice. उसको कभी कभी they feel problem they you choice the attention करना उसमें क्या है positive praise and attention for this choice. If child is only placed in time out of third time, if thrown a temper, then they will be not learn as effectively. Yes, this is very common language I've written there. I'm not going to explain. I'll try to explain. If I don't like it, first time reject. I don't like it, second time reject. Third time do uske diya. So what are the temper or the temper tantrum, and they will not learn as effectively. They will be tempered. Short temper ho jayega. Oh, they are doing all this. So we shouldn't do that. First time, automatically you have to shoot. Next slide. So behavior model immediate. कौन चीज हम लोग के immediate करना है in terms of modification technique. What you have to do when using this technique, consequences need to be immediate. Yeah, the modification is not effective if you have to remind them what happened an hour ago or even yesterday. Just see the slide and just listen to me. Immediate क्या करना है? When using this technique, some technique consequences, कोई situation पर need to be immediate. क्या है? The motivation is effective नहीं है. Then क्या करना है? Remind them and what happened an hour ago or even yesterday. We have to ask. This is called recall. To recognize करना है what happened yesterday. Do you remember this? Very gradually, very slowly, like he or she will not think as a teacher or something like that, or caregiver or parent, but very normally we have to ask them, what happened? Do you remember this? This is memory. Okay, next para. Yeah. Hello, बोल रहा है किसी को? Hello, side talk मत कीजिए. Don't do side talk or something. So except me and Sua, please. Yes, sir. I've already changed. Behavior modifications. क्या है? So मेरा term है behavior modification. Find the right strategy. Everything there is one strategy we have to follow. Strategy means strategic plan. ये तो कोई ऐसा जहाज तो हमको रॉकेट तो नहीं कर. I don't have to make a rocket. So strategy plan का मतलब own thoughts and idea to be shared with the child, with the adult. Maybe someone intellectually disabled, she or he might be adult, maybe 20 years, maybe 15 years, 14 years, 2 years, 3 years. Or 3 years, 2 years may not attend school, maybe 4 years, 5 years. Right study. What is the right? Each child is different. Need to find the technique that works best for the child. Just to check this one, only the first 2 lines.
Each child is different, so it is needed to find the technique that works best for the child. Every individual has their own choice. Not only there, everyone, every human, person to person differ. Let me ask one to the participants or speakers. What color you, just one by one, 2, 3 people, just what color you choice? Say someone, please. Yellow. Yellow, sir. Next. Yellow. Green. Pila. Yellow. Pila. Next. Green. Next. Green बोलिए जल्दी जल्दी बोलो, please continue. Blue. Yellow, green. Blue. And that's blue. Okay. Yes. 2 yellow, 1 is green, and 1 is blue. Then why not red? Why not red? Why not black? Okay, let me explain. So, color depends on situation. If I go to the party, maybe we like red and white. Sorry, black and white. So, it depends on based on the environment. So, child is also same. So, they need phantom tech that works best. So they will Chinese, they don't want to say the color, but they will feel this is not good. Everybody's choice will not be the same. So we have to consider. So we'll say if you ask one thing, so it doesn't mean everybody will choose. May they say okay, but that okay is not correct okay. Depends on you how to handle the child in a proper way. Another thing is that one that worked well with positive reinforcement. Oh, very good, excellent. You did a very good job. While another one might only learn through positive punishment. You understand? Only if they're sending something, so it is interrupted for me. Okay, chat box. Just wait. One child that well with positive reinforcement. Okay, let me explain about the positive reinforcement. What is the reinforcement? Enforcement, we are the reinforcement. Let me speak few words about this. It means that only not in word, not in mouth. Oh, very good, very good. You just use some sticker. Use some sticker. Somebody told chocolate or something like that. Maybe a bit costly, so sticker. Just put one star. So everybody is impressed in the positive reinforcement. Oh, very good. I got 1 star, 2 stars. I think you are doing. But anyway, I'm talking about my own idea and thoughts practically. What I found different in the normal school also same. One is sticker, one helicopter, one what I say, the doll, something like whatever the positive reinforcement. Of course, in addition to that, you will speak excellent by heart. That excellent to be a very expression will be very excellent. Your expression will be very excellent. So excellent. You are doing good job. It is not the way to greet a student. Once you find what use the strategy to modify behavior. तब हमको मिल गया this child is reinforced by this. Automatically strategy will find out the strategy. If the chocolate like no, I don't like it. Somebody will say I don't like it. Somebody will like the sticker, one pencil, one color pencil, one small book, whatever the things. Somebody will not no, I need chocolate. Maybe because we have given chocolate to other people, I don't like book, I need chocolate. So anyway, next. Sure. Okay, good. Thank you, Swa. I bother you so much. So, what is the thing? We have to, gist is that we have to find out the what right strategy
for the right child or person or intellectually disabled, whatever you call. Or I can say very student. I will not say all the time intellectually, for the students. Find out the right way or right study for the right students. The strategy of parenting only works when both parents are working together. So work as a team. This strategy of parenting only works when both parents are working together for the greater good. Because let's be honest, it is exhausting to modify behavior. It is exhausting to modify behavior. See that. So father and mother both has to work as a team at home. So they will discuss, I will give this, you give it. So each other follow. No need to make a big plan. It's a normal responsibility of parents to teach their child at home, inspire their child, raise their child, spend that time with the child, bring them. A few days back, I don't want to mention on the year, maybe 4 or 5 years before, we are visited in some places in the subcontinent. So they took their disabled child with us. The same, so we are happy. So he felt also very happy, enjoyed with us. So he could not walk, but anyway, what I say, wheelchair or something like used for him. But so accompany with the child also very important for some journey, some places, some picnic spots, somebody residence, like this. Not only the some consequences at the same works need to occur when certain happen. If a child feels that bed and one parent makes them clean it up and the other allows them to get into bed and snuggle, it will harder for a child to learn as a parent. So you know that whatever the child, they are actually innocent. These students, special child are actually innocent. Intellectually disabled means the IQ level is below 50. What is intellectually disabled? Means their IQ level is below 50. Somebody 30, 40, 20 like this. So they, if they please get in the bed and somebody will angry, but we cannot make them any harder or anything of bad language. These got several different parenting aspects. Okay, next. Okay, just wait. Jara niche kariye. So just okay, this one. No. Oh my God. This one. Okay. Not fine. This is. Okay. This is okay. Okay. So can somebody or response? Is beard modification is same for each child? No, sir. Can you respond? No. I cannot hear. Hello. Yes, sir. So is behavior modification the same for each child? No, sir. No. No, sir. Why no? There's a individual differences in children, sir. So you have to cater. You have to cater to the individual differences. Number one. Any other point? Sir, same strategies will not work with each child because each child's behavior is different. Their way of learning is different. So same strategy will not work with each child. So what we'll do? What we'll do? Sir, individualized educational plans should be done. Individualized educational plan had been applied. Very good. Excellent. Yeah, everybody is fine. So I got everybody's point is 100% correct. So depends, very straight way, depends their response, depends on their age.
depends their intellectually disabled percentage, intellectuality. And intellectual disability is different, a lot of expression. So can't be, should not be the same. So response, वो क्या करना उसको पनिश उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स किसको किसको कौन चीज में कौन आइटम में कौन ध्यान में उसके रेस्पॉन्स करता है, we have to find out. This is the most important for a special school, for a child, for a student. This is the most important. You have to say, you have to work very hard. It is easier from, it's not easy. Teacher is very much, that's why special educator. That's why I call it special educator. Why this is? Because they were made for the special children. Or they are meant for the special children, how to treat individually. If you have multiple children, you will know that none of them are the same. That's what we have discussed. It is needed to adopt modification strategy for each child. Definitely, as you spoke to me already, different strategy for different child. It is not one size fits all plan. Try to do this, it will just end up very fast as a parent started. Okay, Jarur, if I do make a one strategy for everyone, that is irritating, that is frustrating. But that's the point we have to, that's the things we have to adopt for individual response. Individual positive thoughts we have to think, individual child or student. Next. Hello. Yes, sir. Check. Yeah. Okay. So this positive techniques. देखिए, इधर में we cannot find out who is teacher, who is teacher or parents, who is the intellectual disability. So this is the way to handle. The right hand is teacher and she is a student. So positive reinforcement. She expressed herself laughing attitude. That's why the student also did. Very near, no far distance, very near. This is symbolic representation, which we will learn. Next. Yeah, sorry. Yes. Okay. Positive reinforcement क्या उसमें? If kids eat all that dinner, they might be rewarded with a great job eating and a bowl of ice cream for dessert. It's very interesting. It does not mean you will bring ice cream and this. It means that this is just example. They took all the dinners, so they will be rewarded with a something, a sticker, pencil, book, register, or something, chocolate or something like. So this is the positive reinforcement. Playing a game together after finishing their homework. Yeah. So somebody I saw yesterday or today, I can't remember. Play therapy or playing with the kids also very interesting. Indoor, outdoor, whatever it is, it depends on the students or their intellectual disability category or their expressions. Giving a hug when they share with a friend. Giving a hug when they share with a friend. Letting the teenager have an extra hour of screen time because they finish their homework on time and have a missing somebody's chat box. So I cannot read missing assignment at school and have no missing. What is that? They're doing that job very nicely. Timely homework finish and assignment at school. They finish their homework on time and have no missing assignment at school. Everything is very much perfect. These are all reinforcement. Okay, next. Okay, technique for behavior modification. What is the negative? You see the appearance of this child, negative reinforcement. We showed her feel negative. So these are the symbolic representation anyway.
Next. What are those negative reinforcements? Modification, we have to know the negative also reinforcement. Making a child do homework, doing recess because they forgot to do it at home. They forgot it to bring it. So give them some break. Homework, doing recess because they have forgot to do at homework. Negative. Having to go to bed early because they are throwing a temper tantrum. Not being able to see friends for a week after staying out too late like this. A teenager complained we are eating. All these are negative reinforcement. A teenager complained we are eating pasta again for dinner, so they are assigned to cook dinner the next night. Parents should shout because forget to turn in assignment. So all these are negative, which we need to avoid. 100% avoid. Just for example, these are the negatives in the next paragraph. Next slide, please. Okay. So this is positive. You see positive punishment. These are the punishment. You should follow this one. This punishment, clean your desk. Bring this book to there. Clean desk. So this is punishment but positive. She is enjoying this. This picture shows that she is enjoying with this and gloves and other. She's cleaning. So positive punishment. Okay, next. That's right. Technique for behavior modification. Positive punishment are: teenager has not cleaned his or her room. Explain that keeping room clean is responsibility. This is also we require to imply this positive punishment. Then give another room to clean as well, his or her own, so she can practice cleaning. You know, this is positive punishment. We have to remember this very, because they are doing this. Meaning each person is responsible for clearing their spot and making look like they did not eat there. Each person is responsible for cleaning their spot and making it look like they did not eat there. You understand, positive punishment is like that. Child forgets, so they get to come clean their spot and do all the dishes or clean their kitchen. Almost similar all these things are. You hear your child using words that you don't say. You hear a child using words that don't say. Let them write multiple sentences reminding them that we don't talk that way. See, you let them write multiple sentences reminding them that we don't talk that way. That you don't talk it that way. Okay, next. Next slide, please. Yes, sir. Already up. So what is the time? Is it over? No, sir. We still have time. Half an hour. Okay, enough. How many slides you have now? Another, wait, sir. Okay. 12. Huh? 12. Oh my God, then have to do faster, right? So take negative punishment. What is the negative punishment? Toddler forgets to put his toys away after being asked. So toddler forgets to put his toys away after being asked. Understand? The toys they don't put away are taken away for a certain amount of time to remind them pick up. High school talks back to you, so you remove all electronics from their room that they love. Acha, just can you say something without this, without seeing this slide? What should be the negative punishment in practical? Say someone, please share with me. Hello. Anyone wants to answer? So could you repeat the question? What we understand about the negative punishment in a special school or for a student?
सर निगेटिव पनिशमेंट वैसे कि जो बच्चे को अच्छा लगता है वो चीज उनको नहीं देना है। लाइक इफ अगर सारे बच्चे को खेलना पसंद है तो बाकी बच्चों को खेलने देना है और उसको बस उधर उसको अलाउ नहीं करना है। तो या तो यू कैन गिव हिम सम अदर वर्क। Okay, very good, excellent, excellent. So, which they love, say electronic something, maybe toys, maybe some books, just keep away from that student. So they will think, oh, I did a mistake, I did it wrong, that's why. So other people are enjoying with this, like this. Next slide. Just one moment, sir. It's like classroom, No. Okay, chat box है, who is that? Please stop writing chat box. So No, okay. I'm checking the chat box. Okay, so then okay. So behavior model classroom behavior कैसे model है? Just you see this picture. It is symbolically representative. It's very close. Two faces are very close, enjoying, laughing, talking something, positive words, positive vibes, positive environment to create. So you see the boys are handicapped. But even though the teacher is very close to him and just talking something in front of books and others. Next. So this is like bookish. Behavior modification in the classroom. That's a situational. We have to change the behavior based on situational circumstances. To manage behavior through consequences, use the multiple step process. The problem must be defined with a count and design a way to change the behavior. We have to identify the effective reinforce of an individual student. Apply reinforce concept to shape our change. Almost similar like behavior. Classroom also same will be depending on the circumstance, I mean environment, students, age, considering other gender, possibly. You just try to modify consistently to change the behavior. Next, in the classroom. Next. Okay. In the classroom, you see the attitude of a teacher with a student. So he is feeling very happy, express himself. He is the happiest one with the teacher. Next. That's it. How to change the behavior in the classroom. Reinforcement and punishment follow a clear set of basic principles. This is very self-explanatory. As you spoke already with me, what is the punishment, reinforcement and punishment follow. That is positive punishment and positive reinforcement. Clear basic principle. Reinforcement or punishment always follows behavior. Reinforcement or punishment follows the target behavior as soon as possible. Target behavior, there's multiple reinforcement, same like this. Okay, next. Okay, behavior modification in the classroom. It's a bit different. Classroom schedules, fixed or variable interval schedules are time related, and fixed or variable ratio schedules are related to how much work is completed. That is called what we call in our case time management. Okay. Fixed schedule result in higher rates of performance than the continuous schedule. In classroom setting, most teachers use fixed ratio. Awareness build up. If it is fixed, oh, I have to, there is a fixed set, you have to complete by 3 o'clock. So I will be not only hurry, I will understand the time management, time, and will be prepared to complete within that time. That is also
sensory nerves will be more stimulating. They're effective because the child knows exactly what is the expected and the requirements of performance are clearly spelled out. Okay, no need. So evaluate most common classroom problem. What is the common classroom problem? Talking out, being out of the seat, not focusing or paying attention, disruptive behavior. This might be the information obtained is usually observed at 15-second interval. If any of the behavior occur, whatever one or more than one, a single notation is made for that interval. Some interval, give them some interval to think. Next, how they make the relationship with their with other students. So that is the most important. So make all the students with a maybe group, not as a total group. They like their own choices. They will like their own choices, mentally, physically, everything. Okay, next, modeling. Hello? No, okay. Yes. Modeling. Without seeing this, can you explain something about the modeling? Because we are practicing in the school. Anybody can speak on modeling? Hello, so can you explain about the modeling in a Yes, simplest way? sir, explain. Somebody just explain practically. No need to see the long 10, 12 lines. Anyone wants to say what is modeling? मॉडलिंग मतलब है कोई बच्चा को जब हम सिखाते हैं तो उसके सामने वो काम पहले करके दिखा के फिर सिखाते हैं। जैसे कि कोई काम सिखाना, जैसे कि ब्रशिंग सिखाना है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले सेमी ये देते हैं, चार्ट में दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसका पार्ट में काम को मतलब डिफरेंट इसमें डिवाइड करके छोटा इसमें फिर उसको चार्ट में पूरा ड्राइंग करके दिखाता है कि पहले आपको टूथपेस्ट लेना है, फिर टूथब्रश लेना है, टूथब्रश का कैप खोलना है, जस्ट पूरा सिंपल ऐसे इजी स्टेप बनाता है, उसका पिक्चर बनाता है इसमें पहले चार्ट में। उसके बाद फ्लश कट में बनाता है सेमी कंक्रीट, कि सेमी कंक्रीट में बना के उसको दिखाते हैं 1 by 1। उसके बाद उसको कंक्रीट मतलब उसको खुद को करना सिखाता है, एक चार्ट को दिखा के वो फ्लैश कार्ड को दिखा के फिर उसको कंक्रीट करना सिखाते हैं, तो इसको मॉडलिंग बोला जाता है, क्योंकि मॉडलिंग करके सिखाने से वो खुद करते हैं जब उसको देख practical. Anyone can share something practically you have any knowledge or as you do in your class. It's an Any language you imitation. can use, Bengali, English, Hindi, कोई बात नहीं है, जो करना है बोलिए, I will understand. Also I will translate if it is Bengali. So you display the behavior that is accepted in the hope that the child will imitate that behavior. As a teacher, you will display the behavior, or you will use a peer in the classroom to display the expected behavior, which allows for other children to also, the child in question, to imitate and conduct themselves as displayed. Okay, good, excellent. This is also another. So in our cases, what do we understand? Not in the special school. What do we understand? Model. And model. What do you understand about this? We imitate others, like small children imitates their parents, siblings, even. Hello. Please, I can hear you now. Yeah, sir. Mainly imitating part is there. Means what others are doing, the same thing. Same children are following, imitating, and in this case, small children are following more than adults.
and that imitation is there more. Yeah, means reflection. Reflection of an individual or anybody, anything. That is model. So they will follow that one, what they do. Others, opposite side of the table or opposite person or similar they want to, they will follow that one. So that is one of the best way to make the students more active, more reality and practical to overcome all these situations. Okay, next, Swat. Yeah. Shaping. Okay, that's it. Hmm. Shaping क्या होगा? Select a target behavior and define it. As somebody told already regarding behavior, that comes to a shaping. Select a target behavior and define it. Observe how often the behavior is exhibited. Select reinforces. Decide on close approximations and reinforce successive approximation to reinforce the newly established behavior. Old behavior on variable schedule. Okay, shaping can be used for all kinds of behavior in the classroom, including academic. ठीक है, हम तो पढ़ लिए, बोलिए कोई ना कोई इसमें जस्ट शेयर के जो करो प्लीज, शेयर विथ मी, शेयर दिस shaping practically. Those who are the teachers or something or special educators, share this slide in a realistic way. Anybody, please? Okay, let me speak. So you know the learning, there is two ways to learn. One is bilateral, another is incidental. Incidental, we don't want to listen or don't want to learn, but bilateral, automatic, इसमें बोलता है संगो दोष. I don't know how to संगो दोष मतलब ऑटोमेटिक है क्या? सो बिहेवियर जो करना है टीचर को या स्टूडेंट को जो करना है अच्छा होगा, बिहेवियर टीचर अगर कोई शेप करे, the students will gradually follow. Reflection of the behavior. Understand? This is called bilateral transfer. Automatically, you don't need to learn. Automatically, it will come to you. So this is the teacher has to exhibit the real behavior. Automatically, that will reflect to the student. Okay. Next. Next. Can you behave with a child like this in at least in the leisure time? How many? We, those are family members, not asking to everyone, even parents, if I'm single, even we have a family, brothers, sisters, how many we do? One by one, tell me. Hello? So I have to explain for a বুঝতে পারি নাই মনে আমার কথা. Hello? Hello, sir, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কিন্তু আমার কথাটা মনে হয় বুঝতে পারিনি তারা. How many we follow this one to be ideal family with the parents or with the our child? Normal child হতে পারে, not only special children. তো একটু বলো তো, জিজ্ঞেস করো. Okay, what sir is asking is how many of us or how many of the students that you cater spends quality time with their family like this, going Right. out with the parents and having a time just for themselves? Any answer? If you don't want to write safe, you can just write it in the chat box. Yeah, that's better. Because I will study this one for future. I'll make a research. Out of 233, check the responses. Yes. Our students do enjoy family time. I think it's written by Mrs. Melissa Lobo. She says our students do enjoy family time. What about the others? Only 3, 4. Yes. I give you 5 minutes to write down because I'll do research on this.
please share your thoughts so that I can read it from the chat box. 10%, Mrinal Bhave says only 10% of the students do enjoy family like time. हेलो Please. एक्चुअली क्या होता है ना, मैं काउंसलर हूँ और स्कूल का टीचर भी, तो स्पेशल बच्चे लोगों को तो ज्यादातर पेरेंट्स लोग बाहर लेके जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सोशली वो लोग एम्बैरेस्ड फील करते हैं। हम लोग बहुत काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखते हैं कि बोलते हैं उन लोग को सोशलाइज करना है, उसको जानना है सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या है, तो इसके लिए उसको लेके जाना पड़ेगा। तो वो लोग नहीं लेके जाना चाहते। बहुत ही कम 100 में से 1-2 फैमिली वो लोग कोऑपरेट करते हैं, वो लोग लेके जाते हैं बच्चों को हर जगह में। सब बोलते हैं अगर नॉर्मल बच्चे भी आजकल आते हैं, बहुत उन लोगों को मेंटल इश्यूज रहता है तो स्कूल से वो लोग भेजते हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है मम्मी पूरा, अगर मम्मी काम करते हैं, दोनों अगर वर्किंग है तो वो अकेले रहते हैं। और अगर ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा मतलब मम्मी अगर वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, फिर भी वो खाना वाना पकाने के बाद वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं देते। वो लोग बोलते हैं वो तो घर में है, मैं तो पूरा दिन उसके साथ ही रहती हूँ, लेकिन एक्चुअली वो क्वालिटी टाइम कहाँ दे रहे हैं? क्वालिटी टाइम मीन्स बच्चा को टाइम देना, उसके साथ बात करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ शेयरिंग करना, ये सब एकदम कोई नहीं करता है। तो बहुत कम फैमिली करते हैं, हम लोग देखा है। और इस बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ओनली चाइल्ड है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो लोग शेयरिंग का नहीं करते। वो लोग क्या करना है, बिहेवियर क्या है बच्चों का, यही उन लोगों को पता है। So anyway, I got your point, but I think I'm sorry to disturb you. If you're not speaking, kindly mute yourself. You're not speaking. Okay. So और कुछ कोई बोलना चाहता है और সবাই একটু এক্সপ্লেইন করো তো আমার এই কথাটা আইডিয়াল ফ্যামিলি বলতে আমি কি বুঝাচ্ছিলাম এবং সবাইকে এটা ফলো করতে দিতে ফার্স্ট প্রাইম অবজেক্টিভ একটু এক্সপ্লেইন করো তো তুমি বাংলা হিন্দি ইংলিশ। Okay, what sir was trying to say is that what is the concept of ideal family? Actually, ma'am, yeah, sir, I am from Navi Mumbai, and हाँ, तो यहाँ पर जो बताया गया है, I am speaking in Hindi, so everybody can understand. हाँ, तो ये है कि यहाँ पर वैसे नहीं है, यहाँ का पिक्चर बहुत ही अलग है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है बहुत बच्चे लोगों को बाहर लेके जाते हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 60 to 70% parents no spending qualitative time with their children, because it is now from last 10 years whole picture is changed. बहुत सारा चेंजेस आया है और हम लोग को भी पता चलता है कि बच्चों को बहुत सारा नॉलेज है। इवन अभी मैं जो स्कूल में हूँ तो एटलीस्ट 100 students went to their native place. तो हाँ, और वो वहां से फोन करते हैं कि मतलब तो आई थिंक मुंबई में ये नहीं है, ये साइड में तो काफी पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड पिक्चर इज क्वाइट डिफरेंट। बट आई विल से कि सारे पेरेंट्स नहीं है, जैसे पहले एक टीचर ने बताया है कि कुछ कुछ पेरेंट्स है वो अपने बिजी होते हैं, समटाइम्स वी कैन नॉट ब्लेम देम, क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि रोजी रोटी होती है। तो वो मतलब कई बार बोलते हैं ना कि टीचर इसके साथ हम टाइम स्पेंड करें या फिर हम हमारे खाने पीने का देखें, तो ऐसे भी ये है। तो ऐसे में हमको ही फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना पेरेंट्स को कि जब आपको टाइम मिलेगा तब आप उनको लेके जाओ। कई बार बच्चे नहीं जा पाते, गार्डन नहीं जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर चिल्ड्रन। दैट इज I want to make a summary out of it. जो होता है एक एक सोसाइटी में, एक एक जगह में, एरिया में एक एक काइंड ऑफ अवेयरनेस है। शायद आपके नवी मुंबई में अवेयरनेस ज्यादा है बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, इसीलिए वो लोग का वो टाइम निकाल पाते हैं। ये टाइम निकालना नहीं है, ये टाइम देना है उन लोगों के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द टाइम, पार्ट ऑफ लाइफ है बच्चों को टाइम देना। वे खाने पीने का सामान करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद टाइम नहीं।
जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग उसके लिए टाइम नहीं निकालते, हम लोग फोन स्क्रॉल करने के लिए टाइम नहीं निकालते, हो जाता है। तो मम्मी पापा को भी, फैमिली को भी, वो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में लाना है। आपको हर दिन आधे घंटे 30 मिनट्स क्वालिटी टाइम एक साथ बैठ के बोर्ड गेम्स खेलो, एक साथ बैठ के कुछ किताब पे पढ़ो एक साथ। हम हमेशा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये भी हम लोग को मम्मी पापा को सिखाना है, फैमिली को सिखाना है। So anyway, thank you so much. Thank you, the other honored participant. वो मतलब है, this is the thing that we have to do it at least half an hour, as Stuart told, because we know we are working for what we are working for our next generation. You understand? Not for ourselves. So we are working as a parents. हम लोग work करेगा. If I'm single, I work for my parents. And what parents will do? Parents will work for their children. So this is the most important for modification technique. Even they are normal or even special, it doesn't matter. We can give that time for wife. Sir, we can spare. We have enough time for our spouse, but we don't have any time for our children. So this is the most important for modification technique. Oh, already we spoke earlier also. So many speakers spoke about that. Next, Swa. The conclusion done. Yep. A bit more, टू था, बस ठीक है। अच्छा, conclusion का मतलब, इसका conclusion कोई नहीं होता है। तब भी even though I've written there, because we have to gist. Changing your behavior strategy open the most efficient and effective means of improving all types of classroom behavior, both disruptive and not disruptive. So practice comes proficiency. Thus, see, through practice comes proficiency. From the practice continuously practicing with the children how to change. We have to change first ourselves. We have to change ourselves. If I do change for the modification techniques, behavior, we have to change. We have to forget our own problem. Building block of emotion and behavior likely contains the largest, most diverse set of problems encountered in the classroom. By the first understanding these problems and seeing the world through the eyes of your students, and by then developing and using a set of intervention strategy on a regular basis, problems of emotions, behavior can be effectively managed and changed in the classroom. What is the gist of this? It's just language I read out. Nothing, no meaning. But thing is that we have to change ourselves first to modify the behavior, to modify technique, behavior of the student. Means I have to be cheerful, I have to be enjoyable, I have to fun loving, I have to love them, I have to close to them, I have to share their problems. Somebody told, I don't need to mention anger or something like today already spoke about the anger and this and that. I want to share mostly for the teachers. Change your modification technique. Model. Just show the model. You are number one model. You put some of the example of the students as a model. You shape up them. So the what I say in the color print, colors, give some star, some sticker, some write 10 out of 10, like a lot of things to inspire. When you go enter to the class first, just say hello, how are you? I think everybody is very fine. Like jarur acha hoga. Okay, you are all looking lovely faces. I can see like all this positive. Say alone. Say yourself. Everybody will understand. Even a 4 or 5 year child will understand. So they will jump up from the room, from the desk, or somebody cannot jump up. Anyway, always inspire till you finish the class. Very slowly. So I am not a teacher of a special school. However,
I just studied. I took days. So, Soa, Yes, sir. বলার তো আর শেষ নাই। তুমি একটা কাজ করো, সময় শেষ, তুমি একটু কনক্লুশন করো এগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি কি বললাম, what I spoke. Oh, question and answer, right? I forgot. Go. The most important. Jao. That's okay. Keep it. So very freely, frankly, if you don't ask questions, how can I? अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं किएगा, हम कैसे हिंदी से बोलिए? आप मेरी बात, अब हिंदी आता है आपको, कोई कुछ भूल भ्रांति क्या बोलता है उसको माइंड मत कीजिए, कुछ आता तो कुछ बेंगली भी चला जाएगा, और जे बांग्ला बोलबो ताके बांग्ला बोलबो, Yes, PPT will be shared. इंग्लिश बोलबो, All इंग्लिश बोलबो PPT ताके will be इंग्लिश shared. बोलबो। All Follow. PPT will be shared. You need not ask about request about it. Everything will be shared to you. না তারপর বলুক, জিজ্ঞেস করুক। Anybody have any question? No questions? Yes, sir. Can I speak in Bengali, sir? Yes. Sure. যে ল্যাঙ্গুয়েজ বলবেন সে ল্যাঙ্গুয়েজ উত্তর দেব। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি একটা গ্রামের দিকে বাস করি, তো মানে আমার বাড়িটা গ্রামের দিকে, তো আমি একজন স্পেশাল এডুকেটর। তো এখানে আমি প্রবলেম যেগুলো ফেস করি সেগুলো হলো, আমরা এখানে যখনই ওভারঅল কোনো জায়গায় যাই বা দেখি যে আমাদের এখানে স্পেশাল চাইল্ড কোথায় আছে বা তারা কোনো প্রবলেমের মধ্যে আছে কিনা, তো সেই জায়গাগুলো গিয়ে আমরা দেখতে পাই এখানে অনেকে স্পেশাল চাইল্ড আছে, বাট এখানে মানে ওইভাবে কোনো কিছু বা কাউন্সেলিং বা তাদেরকে কোনো স্পেশাল এডুকেটরের কাছে পাঠানো বা কোনো অডিওলজিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া, হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো জায়গাতেই কিছু করা হয় না। কারণ তাদেরকে আমি যখন জিজ্ঞাসা করি বা আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা কেন করেন না, তো তারা একটাই অ্যান্সার দেয় যে এগুলো করে কি হবে, এগুলো করে কিন্তু কোনো ডেভেলপমেন্ট বা কোনো ইয়ে হয় না। মানে আমরা এটা কোনোভাবেই অ্যাওয়ারনেস করতে পারি না যে এগুলো থ্রু দিয়ে আমরা তাদেরকে কিছুটা কিউট করতে পারি। তো সেই দিক থেকে আমরা কি করলে আরো বেশি ভাবে তাদেরকে মানে অ্যাওয়ারনেস করতে পারবো এবং তাদেরকে এই চ্যানেলের মধ্যে, এই প্যানেলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো, সেটা একটু জানতে চাই স্যার। ভেরি গুড কোশ্চেন, খুব ভালো একটা প্রশ্ন করছে। আমি বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলি, সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাও বোঝে সবাই কম বেশি। সেটা হচ্ছে যে এটা কারেক্ট, আসলে প্যারেন্টিং কাউন্সিলিংটা দরকার, প্যারেন্টিং কাউন্সিলিংটা দরকার ফার্স্টে। এটা তো ঠিক করা যাবে না, এটা শিওর কন্ট্রোল করা যায়, যথেষ্ট কন্ট্রোল করা যায়, যথেষ্ট। কিছু বাচ্চা নর্মালাইজ হয়ে যাচ্ছে, বেশ অনেক বাচ্চা, ডিপেন্ডস করে যে ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবিলিটি পার্সেন্টেজ কতটা, তার মধ্যে আইকিউটা কতটা আছে, এটা অনেক ডিফার করে। তো আইকিউটা এটা আবার মেজারমেন্ট বোঝা যায়, এগুলো অনেক টেস্টের ব্যাপার, সেখানে ডিপেন্ড করে। কিন্তু যারা মোটামুটি অ্যাভারেজে আছে, আমি দেখছি অ্যাভারেজ তাদের একজন প্যারেন্টস থাকে বা কেয়ার গিভারটা দেয় না, ফিমেল হলে ফিমেল কেয়ার গিভার, মেল হলে মেল কেয়ার গিভার বা ফিমেল হতে পারে, আর প্যারেন্টস আর দ্য বেস্ট। তখন দেখা যায়, আমি দেখি আমার কাছাকাছি একটি স্কুল আছে ভেরি নিয়ার, ওই যাই হোক ওখানে আমি বসতাম বেশ কিছুদিন আগে 2000-এ, তখন দেখতাম যে অনেকটা কন্ট্রোল, হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে, ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসেবল হলো, অনেকটা কন্ট্রোল। তো প্যারেন্টসকে ফার্স্টে কিন্তু দিতে হবে, তাদের সাথে আলাদা বসে তাদের কাউন্সিলিং দিতে হবে। দে আর দ্য বেস্ট। ফার্স্ট ইনস্ট্রুমেন্টটি আমার ফার্স্ট সাবজেক্টটি হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে প্যারেন্টস, দ্যাট ইজ অনলি দ্য ওয়ে। আর যে প্যারেন্টসই টোটালি চাবে না, তাকে তো আর কিছু করা যাবে কিনা আমার মনে হয় না। তবে সবাই চায়, ওইটাই বলে না হবে না, এই ঈশ্বর প্রদত্ত বা গড প্রদত্ত বা ভগবান প্রদত্ত বা আল্লাহ প্রদত্ত এরকম একটা বলে দিয়ে পাশ কাটিয়ে নেয়। কিন্তু না, প্রদত্ত বলে তো ওটা বললে তো আর সবকিছু হবে না, তাহলে তো আমরা সবাই হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে যাবো। উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ আওয়ার জার্নি till we achieve the target. In all cases, we have to continue our journey till we achieve the destinations. So parent ke counseling then. Any other question you want to share with me? Yeah, I want to answer this. The question to করলেন উনি গ্রামের দিকে আছেন। Let me answer it in Bengali first, then also in English. যেহেতু গ্রামের দিকে আছেন, এই যে আপনি বললেন যে বাবা মারা বলে এগুলো করিয়ে কি হবে, কোনো ফল হয় না। যেহেতু আমি যে স্কুলটার সাথে যুক্ত আছি, তারা যেহেতু স্লাম চিলড্রেন নিয়ে কাজ করি আমরা, তো কি করি, যে কোনো একটা কি দুটো কেস যেগুলো সাকসেসফুল হয়েছে বা কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, তাদের মা বাবার সঙ্গে আমরা তাদের কথা বলাই।
যে আগে তাদের বাচ্চা কিরকম ছিল, এডুকেশন বা আপনার যে কটা আমরা অ্যাক্টিভিটিস করাই করে এখন বাচ্চা কিরকম আছে। কারণ তারা জানে আমরা কিছু বললে টিচাররা পয়সার জন্য টিচাররা বলে, বাবা মার এখনো ধারণা তাদের। কিন্তু যখন একটা বাবা মা যখন কথা বলছে যে আমার বাচ্চা আগে এরকম ছিল, এখন সে আই কন্ট্যাক্ট করছে, এখন সে নিজের টয়লেট ট্রেনিংটা ঠিক হয়েছে, তখন কিন্তু বাবার অনেকটা কনভিন্সড হয়। কারণ যখন একটা পেরেন্ট টু পেরেন্ট যখন কথা হচ্ছে, আমরা কথা বললে কিন্তু এখনো ভাবে মার্কেটিং করছি আমরা, যে আমরা নিজেদের পয়সার জন্য স্কুলে বাচ্চা ঢোকানোর জন্য বলছি। চেষ্টা করবেন কোনো সাকসেসফুল যে কেসটা একটু সাকসেসফুল বা একটু ইমপ্রুভমেন্ট, তাদের সঙ্গে কথা বলে দিতে পারবো। অনেক কাজ। ওকে ম্যাম, ওকে ওকে ওকে, জাস্ট টু আনসার দিস। থ্যাংক ইউ ম্যাম, প্র্যাকটিক্যাল গাইডেন্স। হ্যাঁ, এটা তো আমরা করে থাকি, তাই সেটা বললাম। Okay, now to answer the same thing in English, what he said, I forgot the name of the person who asked the question. He said, like, since he stays in a village and people are not very open to going to special educators because they think that they do not understand, there is no necessity, since there will be no improvement, how to work on it. Since I work in a school that works with slum children, what we do is, the families don't believe what the teachers or the school management says, because they think it's a business that we want to trap their kids. So what we do is, with any child who have shown little bit of improvement or has improved a lot, we ask their parents to talk to that parents and tell us what the new scope is all about, how things can be better. This is a practical application that we all do here. Any questions? Actually, ma'am, আমি একটু বলছি। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, আমি যদিও গ্রামের দিকে থাকি না, শহরের দিকেই আমি একটা স্পেশাল স্কুলে যুক্ত আছি। তো অ্যাকচুয়ালি পেরেন্টকে আমি যেটা বলি সব সময়, যে আপনি তো চিরদিন বাঁচবেন না, আপনার অবর্তমানে আপনার বাচ্চা যাতে অন্যের বার্ডেন না হয়ে যায়, অন্যের বোঝা না হয়ে যায়, সেই জন্য তাকে যদি খাওয়াতে শেখানোটাও আপনি করাতে পারেন বা টয়লেট ট্রেন্ডও করতে পারেন, দ্যাট ইজ এনাফ ফর ইয়োর চাইল্ড। তো এইভাবে কিন্তু কাউন্সিলিং করা যায়। যেগুলো সেলফ হেল্প অ্যাক্টিভিটি, সেগুলো যদি ছোট ছোট ভাবে ওদেরকে শেখানো যায়, কারণ আমি খুব সিভিয়ার বাচ্চাদের নিয়ে ক্লাস করি। আচ্ছা, তো সেখানে ওদের ক্রাইসিস লেভেল থেকে এইভাবে আমি টেনে বার করি। এটা খুব ভালো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, খেয়াল রাখবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কার কোনো প্রশ্ন আছে? এনি কোয়েশ্চেনস? কোনো প্রশ্ন নেই? কোনো প্রশ্ন নেই, তাহলে স্লাইড শেয়ার অফ করছি। এবার আপনারা বলুন কার কি প্রশ্ন। আর যখন কিছু নেই, তাহলে আজকের মতো সেশনটা, 3 ডে সেশনটা আমরা অফ করছি। আপনাদের 4টা থেকে 5টা মতো ইভ্যালুয়েশন আছে সিআরই পয়েন্টস এর জন্য। এক মিনিট ম্যাম। হ্যাঁ, আমাদের সাথে আমাদের 2জন স্যার এবং আমরা সবাই মিলে আমরা বোর্ড অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমরা খালিদ স্যার এবং আমাদের অনিরুদ্ধ স্যার আছেন আর কি। আর আমাদের নতুন করে আরেকজন গেস্ট আছেন আর কি আজকে, অপূর্ব দ্বিবেদী আর কি। আমাদের নাসরেফ যে আমাদের একটা অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন আছে স্পেশাল এডুকেশনের, উনি রয়েছেন। একটু ওনাকে একটু কিছু বলার জন্য বলবেন, তারপরে অনিরুদ্ধ স্যার একটু বলবেন, খালিদ স্যার বলবেন, আমরা সবাই মিলে একসাথেই শেষ করবো আর কি প্রোগ্রামটা। আচ্ছা, আপনিও থাকবেন, ঠিক আছে? Can I request Mr. Dwivedi to come and say something regarding the program that was there? Apurva sir, Apurva Dwivedi sir. Apurva Dwivedi sir, are you there? Jolly, yeah. Apurva sir. Apurva sir, could you please unmute yourself? जी आवाज आ रही मैडम? हाँ, बोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर मतलब कि हमको इस मंच पे आमंत्रित किया। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा तपस सर का एवं उनकी पूरी टीम का और आपके ट्रेनिंग सेंटर का हार्दिक आभार। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग का एक मतलब नेशनल लेवल का एसोसिएशन है जिसका नाम नासेप है, और हम लोगों ने स्पेशल टीचर की पोस्ट क्रिएट के लिए सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि 6 साल से हम लोग मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें 28 अक्टूबर को एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया था
और जिस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। और जैसा कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट लगाया था कि वहां पर 41,121 स्पेशल टीचर पोस्ट वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर हम इतना कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में स्पेशल फील्ड में कोई भी स्पेशल एजुकेटर बेरोजगार नहीं बचेगा, जो सारी योग्यता रखता होगा। और सभी स्पेशल एजुकेटर से इतना ही कहना है कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दुरुस्त रखें, आरसीआई का रजिस्ट्रेशन वगैरह, टेट सीटेट सारी चीजें पूरी रखें। और आने वाले टाइम पे जल्दी ही वैकेंसी आएंगी, तो सब लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोग नासे संगठन का पूरी तरीके से सहयोग करें, और आने वाले टाइम पे नासे संगठन आप लोगों की लड़ाइयां लड़ता रहेगा। और इस फील्ड से जुड़े हर प्रोफेशनल के लिए आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग बस नासा के साथ जुड़े रहे, और अदर स्टेट भी धीरे धीरे उसी आटा के इम्प्लीमेंट स्टार्ट करेंगे, और पूरे भारत में हर स्कूल में 2 स्पेशल टीचर इन फ्यूचर अपॉइंटमेंट होंगे, जिसका काम जो है, जिसका जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे चुका है। आगे इसका इम्प्लीमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ हम अब मतलब कि अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तपस्या का, आपने बोलने का मौका दिया। जय विशेष शिक्षक, जय नासिफ, आपको लोगों का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। अब थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ आई कॉल अपॉन बहुत थैंक यू मैडम, बहुत थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার। ম্যাম এখন ইয়ে অনিরুদ্ধ স্যার আছেন আর কি। আচ্ছা, অনিরুদ্ধ স্যার, could you please come and share your thoughts? Do I share my thoughts, or I will ask to give the vote of thanks? Vote of thanks. Share your thoughts. Share your thoughts on this program and a vote of thanks. No, that is a little difficult for me, because this is the first time I was never there in the program, whole of the program, because I was out of station. Even now I'm in the train, so I really don't know. It must have been a wonderful program. It must have been a wonderful program, I understand. This is the first time I could meet there, but then actually that doesn't matter, because Taposh and his team has become, self-reliant now, so they are able to handle themselves everything. So that is a wonderful job they've been doing for so far. As you have been watching, that these people, Taposh and his team, they've been working from a very remote place, a hamlet village, or even less than that. It's hardly a village also. They've been working with all the constraints, and they don't have really proper buildings, they don't have really proper infrastructure, and then they've been doing such a thing which we don't find in rest of West Bengal really much, and not much in the rest of the country also. But from that small place, they have been conducting these programs, regional, national, even international programs, so well. So we should give them a very big round of applause. Of course, it's possible you may not hear this, but we should give a very big thank you to all of them for doing this wonderful job for special education, to all of us here. All those who have been connected with Taposh, we know what else also he has been doing. I'd like to give a special thanks to Dr. Khalid. Dr. Khalid has been a great help for us. It's a backbone, very strong backbone for us. And the way he has been conducting things, and the way he has been bringing resource persons from all over the world, which would not have been possible otherwise, is just, I mean, we don't have any words to really say thank you. I've talked to you over this platform only on a number of occasions. I know how much you really know, and how well you have been presenting things also. So a small thank you isn't enough. So we'd like to have you with us here once you are able to come over to India, now that all the protocols, COVID protocols are over almost. So if you come over, we'll be ready to host you out here and learn so many other things from you. Thank you, sir, for so much, for being with us for so long in such a big way. That too. I'd like to thank all the resource persons who have been here. I'm sorry I couldn't meet them this time,
I normally know most of the resource persons, and this time the problem is because I was out of station. So I know even now I'm out of station. I'm in a train, moving train. I don't know how long this will last. This network will be there. So the way you have been helping us, madams and sirs, whoever is with us from remote places like the States or even the Middle East, a number of people from Bangladesh, from Nepal, Bhutan, and also all over actually, and all over the country. I understand there were some problems for some participants because it was all in English mostly, and of course Hindi was there on few occasions, and for some again both in Hindi and English were problems. But because we had to do it in English, it was an international platform. So we have to also learn to communicate in English. That is very important these days. So that they have done a wonderful job. All the resource persons have done a wonderful job, and they have been doing it for the last, I think, 7-8 occasions we are here. So we'd like to give them a big thank you, really. I mean, just a thank you is not enough, I know, but still, from so far we really just can't do anything else. So our invitation to all of you, whoever is there out of station, whoever is there out of the country or in other states, please do come over to a place and see for yourself what these people are doing. And your suggestions, your help will definitely go a long way for us. So we shall be able to improve a lot. And we have been, of course, we have been improving. We have been doing so much. And the participants, some 200 plus participants I see here. So a big thank you to all of you that you have been here with us the last 3 days. I'm sure you must have learned a lot. You have participated a lot. You have interacted. We have heard your questions. We have heard your answers. We have seen how you are able to suggest a lot of things. So we also need your guidance at times. Please keep up the good work. I know most of you have been here earlier also, but some of course are new. I'm sorry again for our medium of communication. आप लोग जो है हमारे साथ, आप लोग जो हिंदी समझ सकते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ थे, आप लोग इंटरेक्ट किए हमारे साथ. आप लोग से भी हमें मदद चाहिए. प्लीज बाकी सबको बोलिए, और सब जितना भी मौका हम लोग दे सकते हैं सभी को हम देना चाहेंगे. और तापस वर्मा और उनको टीम है, उन लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे तरीके से. And Madam here, of course, Madam Mitra, I am meeting her for the first time actually. So thank you for so much again for being with us. I'm sorry, I really don't know where are you from, but in any case, thank you so much. You have been helping us and all along. And again, once again, I'm very sorry that I wasn't there all these days. It was just not possible on my part physically. Plus the network issue was always there. So thank you all of you once again. Thank you, Taposh and your team. And of course, once again, Professor Khalid sir. Thank you, sir, so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Khalid sir. sir. Thank you, Khalid sir. sir. Khalid. অনিরুদ্ধ স্যারের জন্য কিন্তু ভালো খবর আছে। অনিরুদ্ধ স্যার কিন্তু কালকে টিম জিতে আসলো, কিন্তু শিলং থেকে পুরা টিম জিতে আসলো। কোথা থেকে? শিলং থেকে। শিলং থেকে। ও মাই গড, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অনিরুদ্ধ স্যার। Khalid sir. কি বলেন? Khalid sir. বলেন। Can you hear me? হ্যাঁ, Khalid sir. বলেন, শুনতে পাচ্ছি। Hello. শুনতে পাচ্ছি। With all your blessings, we have won the tournament. We are champions. We have brought a trophy home. I know. Very good, excellent, Thank you. excellent. I know you are. That's right. You are so engaged with that tournament. Okay, thank you. It's a great fun. We are proud of this. Proud of this. কালকে জিতে আসলো অনিরুদ্ধ স্যার, পুরো টিম। উনি জিতবে না, কে জিতবে? উনি সব দিকে আছে, বুঝছেন না? খেলতে খেলতে আমাদের সাথেও তো আছে। গতকালও হচ্ছে, আজকেও তো হলো। যার শেষ ভালো তার সব ভালো, বুঝেন না? Excellent. Excellent. So all credit goes to Mr. Taposh Burman and his organizing team and Swapna
society. Special thanks to Taposh Barman also for his dedication, unconditional love and to the special child. That's the reason I personally interested to try to help this organization and Mr. Taposh Barman. He called me all the time and said, "Sir, it is confirmed, it is confirmed." So I am proud of this. बहुत अच्छा তাপস দা আপনার পরিশ্রম আমাদের সাফল্য এনে দিল এবং ভবিষ্যতেও আমরা আশা করি যতটুকু সম্ভব আপনার সাথে থাকবো এবং for the development of child, for the human well-being, so we are proud of this. আমাদের স্যার সফলতার জন্য একটু বাংলায় বলি আর কি। বলেন বলেন। আমাদের সফলতার জন্য প্রথম শুরুটা হয়েছিল অনিরুদ্ধ স্যারের হাত দিয়ে। হ্যাঁ, তারপরে এখন আপনার সাথে চলছে, ঠিক আছে। অনিরুদ্ধ স্যার সব সময় আছে আমাদের সাথে। আমি বলে একটা প্রোগ্রাম মিস করছি নাকি? আমি বেশি মিস করি, একটা বা দুটা না। আমি পাস করে দিয়েছি, আমি প্রাইমারি স্কুলটা পাস করে দিয়েছি। এখন খালিদ স্যার পিএইচডি করাচ্ছেন, খালিদ স্যার পিএইচডি করাচ্ছেন এখন। গ্রাজুয়েশন এবার একটা ভালো হয়েছে একটু, এবার একটু আবার বেশি ভালো লাগছে কারণ খুব বেশি অর্গানাইজ ছিল, বুঝছেন অনিরুদ্ধ স্যার। এবার একটু ইমপ্রুভ হয়েছে অনেক, মানে সব নেট প্রবলেম ছিল না, স্পিকাররাও কমফোর্টেবলি বলতে পারছে, তাই না? তাই না তাপস দা, তাই না? এবার একটু নেটের প্রবলেম হয়নি। হ্যাঁ, না এবার সব ঠিকঠাক ছিল, সুন্দরভাবে এবারে হয়েছে। আর অনিরুদ্ধ স্যারও শেষটা বলে দিয়ে আর কালকে একবার ঢুকলো, পাস করে দিয়ে এবারে গোল দিয়ে দিল আর উনি নিজেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। ও মাই গড, অনুরোধ স্যার আপনি তো ডেঞ্জারাস মানুষ। উইল ইনভাইট ইউ টু প্লে ইন বাংলাদেশ কম্পিটিশন কোনো হলে। আজ বলেন না কাকে বলতে হবে, এখানে তো হয়, আমি তো জানি না। ট্যাগ করেন না। I have prepared them for 30% marks and you have prepared them for distinction. Without your support it could not be possible. আপনার হাতটা রাখা আছে মাথার উপরে, আমাদের সবার মাথার উপরে আপনার হাত রাখা আছে। A blessing is very good. Sign off. I think this movie need for the problem again. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. মিস্টার তাপস বর্মন কাজ আছে মনে হয়, তার অনেক এভলিউশন করবে। স্যার আমাদের এই যে খালিদ স্যার আমাদের টিম মেম্বার, আমাদের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আর কি, ओल्ड हम लोग को मेंबर है विनायक नंदी। साथ में हम लोग का हम लोग का स्पेशल टीचर है, वो CRE टीम का भी मेंबर है अताउल सर। हम लोग का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर है अमिताभ बर्मन, वो हम लोग का अकाउंटेंट है। ये हम लोग को CRE टीम का पूरा, और भी 2 मैडम है CRE टीम का साथ जुड़ा है। ये हम लोग मिलके हम लोग ये जो प्रोग्राम चलाया है, आप देख रहे हैं पूरा हम लोग का यंग टीम है, पूरा छोटा टीम है। ये टीम मिलके हम लोग ये प्रोग्राम हम लोग मतलब सक्सेस किया है। वो आप लोग का हेल्प और हम लोग का जो पार्टिसिपेंट, इनका भी मतलब इसमें हेल्प है। सभी को मेरा तोराई डुआर्स स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज से और मैं हम लोग का सपना सोसाइटी से धन्यवाद देने चाह रहा हूँ। और अगले और कुछ CRE हम बनाएंगे तो आप लोग को फिर हम लोग इनवाइट करेंगे। आप लोग चाहिए तो अटेंड भी हो, नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। हम लोग को पूरा यंग टीम है और पूरा छोटा टीम है। आप लोग का हेल्प और स्वा मैडम का भी हेल्प, खालिद सर तो पूरा हम लोग को सिर्फ हम लोग का टीम अभी बांग्लादेश में नहीं जुड़ा है। खालिद सर के हाथ से हम लोग USA, फिलीपाइन हम लोग जुड़ रहे। आगे वाला दिन में खालिद सर को भी मैं मतलब बोलेंगे, आगे वाला दिन में और भी कुछ दूसरा कंट्री से भी मिला दीजिए। हम कोशिश करेंगे अच्छा से ये जो CRE प्रोग्राम है RCI का स्ट्रांगली हम लोग ये मतलब सक्सेस करने के लिए। प्लीज आप लोग जितना भी पार्टिसिपेट है कोशिश करिए। ये जो हम लोग का स्पेशल फील्ड का है, इस स्पेशल फील्ड का हम लोग ट्रेनिंग लेके सभी हम लोग बैठ गया है। तो बहुत दिन हो गया है जो हम लोग को ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, कुछ CRE नहीं कर रहा है।
ये CRE द्वारा जो आप लोग का नॉलेज गेन हो रहा है, आप लोग प्लीज आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा काम में लगाइए। और साथ में जो सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को मतलब तोराई डुअर स्पेशल एजुकेशन तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट तो हर जगह में मिल जाता है, बट ये जो आप लोग सिस्टमेटिक अटेंड करिए, अटेंड करने का बाद जो भी हम लोग का मतलब क्लास वर्क दे रहा है बा आप लोग का जो भी नॉलेज दे रहा है सर लोग इतना डेडिकेटेड करके, अभी देखिए मैथ सर कहाँ से, उन लोग का जब हम लोग का दिन है, उन लोग का रात है, रात में जाग के 1 बजे था, 1 बजे 1 बजे, हाँ रात 1 बजे उन लोग जाग के हम लोग को ये डेडिकेटेड किया है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान से आप लोग ये जो 3 दिन है वो अच्छा से लीजिए, ताकि ना आप लोग को फ्यूचर लाइफ में आप लोग को काम में आएगा। ठीक है, यही मैं बोलने चाह रहा हूँ। आगे वाला दिन में आप लोग कोशिश करिए 100% अटेंड करने के लिए। कोई कोई टाइम में नेटवर्क हो भी सकता है प्रॉब्लम, बट कोशिश करिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अलाउ कर दो। आप लोग का जो सर अपना স্পিকারটা অন করে দিন স্যার। সোয়া ম্যাম আপনারটা স্পিকারটা অন করে দিন। অন করছি, বলেন। আর আমরা सर्टिफिकेट हम लोग सर्टिफिकेट 7 डेज का 3 डेज का अंडर बाय व्हाट्सएप में आप लोग को मिल जाएगा, जिसका अटेंडेंस फुलफिल है, 100% अटेंडेंस हुआ है और 70% मार्क अचीव किया है, उन लोग सर्टिफिकेट 7 डेज का अंदर मिल जाएगा। जिसका हम लोग एब्सेंट देखा है, मतलब 90% टाइम में इन लोग एब्सेंट है, तो उनको सर्टिफिकेट हम इशू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम से अच्छा से अटेंड करने के लिए। और किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकता है। अभी हम लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप में ऑलरेडी हम लोग अताउल सर ने ऑलरेडी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जो एवोल्यूशन शीट और फीडबैक फॉर्म आज भी चार फीडबैक फॉर्म गया है। 4 रिसोर्स पर्सन था, 4 रिसोर्स पर्सन के अलग अलग फीडबैक फॉर्म गया है। और साथ में हम लोग को ये जो 3 दिन का कार्रवाई जो हम लोग सपना सोसाइटी और तोराई डुअर्स कॉलेज हम लोग किया है, ओवरऑल आप लोग को प्रोग्राम आप लोग को कैसे हम लोग मदद किया है, आप लोग को साथ हम लोग कैसे कांटेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत आपको रिप्लाई दिया कि नहीं दिया, ये जो सारा सिस्टम के लिए एक फीडबैक फॉर्म आप लोग को भेज दिया है। प्लीज आप लोग अच्छा से ध्यान से ये जो फीडबैक फॉर्म है वो ध्यान से आप लोग फिलअप करिए, ताकि ना हम लोग को आगे वाला दिन में जो फीडबैक फॉर्म आएगा उस हिसाब से हम फिर कोशिश करेंगे जो जो प्रॉब्लम है उनको मतलब प्रॉब्लम को हटा के हम लोग मतलब अच्छा से और भी करने के लिए। सर आपने एक तो बोले दिन सर हमें तो okay. हिंदी I don't want to make it much complicated. ये हम बोलना चाहते हैं आप लोग का participant, if you maintain the time management and 100% participant, that will help facilitate you to way forward your target or mission. आप लोग अगर 100% आप लोग खाली पेमेंट करने का लिए नहीं, you have to follow the every speakers. There is some speciality you will find. Every speaker you will some facility, some special tips you will get from there. So try to write down all these things. Try to collect the. I don't know about the presentation you will receive or not. But anyway, keep in touch in future also to develop yourself. Not only the certificate. Certificate is a piece of paper. Nothing. 20 years before 2000 before, I didn't show anywhere my certificate. Only they appoint me, and 3-4 days they took that they really he has the experience. So experience, knowledge will reflect your certificate. It is required, definitely certificate required, but just to entry. So please keep in touch with the Swapna Society in future. If you are a develop either psychology or in the special child, whatever the thing, all these are related to the psychological management. In terms of special schools,
even it is a normal school, whatever, whenever, you just, so especially at times, all caddies not goes to Khalid, not goes to Soa. They're just brush of people. All caddies goes to Sapno Samiti Society. Really, you don't know how many times he knocked me. You couldn't guess. How many times Mr. Tapanda I'm to knock here. Sir, every session, sir, it is confirmed. Sir, it is confirmed. WhatsApp and directly over phone. So we of course caddies goes to, very frankly speaking, to Sapna Society with his team, and special also Tapan Burman, Mr. Tapos Burman, for his dedication. Really exceptional. You couldn't understand how he worked, how he managed me, how he managed all the across the world. Very good communicative person. So suppose we pray to Almighty for your great success. আমরা যেন প্রতিটা প্রোগ্রাম যেন ঠিকভাবে করা যায়, জন্য আমরা প্রতিটা সময় মানে দিন রাত এই যে 3 দিন যে যায় স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টাফরা প্রচুর সময় দিতে হয়, মানে কার যে কি সমস্যা, কোন সময় কি সমস্যা থাকে, আমরা সব সময় দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি। এবং আমি জানি আপনারা মানে ঘুমান কিনা আমি সন্দেহ, লাঞ্চটা এখনো সে করে নাই। আমি জানি তার ফিডব্যাক সব, সে বলে স্যার এগুলো শেষ হলে করবো। সে হি উইল হ্যাভ হিজ লাঞ্চ at 8 o'clock, লাঞ্চ আর ডিনার একসাথে করবে। সো ফর দ্য ডেডিকেশন, এগুলো আসলে পয়সা দিয়ে পাওয়া যাবে না, মানুষ থাকে এক একজন। So he is that person. আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলি, আপনি বলবেন আপনি কেন নাম হচ্ছে, he is not my relative. He took me as his own elder brother. সে আমাকে এইভাবেই ট্রিটমেন্ট করে সে আমাকে রাখে। আবার আমি তার এই সিনসিয়ারিটি যদি আমি কমিউনিকেট করি, ঠিক সেমও আমাদের অনুরোধা স্যারও এরকম এক্সেপশন। সো আপনারা যারা পার্টিসিপেন্ট, I actually convey my gratitude and sincere thanks to you as well, because you are also honored at your own place. You are professor, senior professor, special educators, I know. So all are honorable participants here as a total. আচ্ছা স্যার, এক মিনিট স্যার, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য রয়েছেন বিনায়ক নন্দী, উনি একটু বলবেন আর কি। শিওর শিওর, বলতে দেন, আমি আপনার তো শুনতে, একটু নামটা বলুন পুরোপুরি শুনি। নমস্কার। নমস্কার, আমার নাম বিনায়ক নন্দী, আমি এই স্বপ্ন সোসাইটির সাথে জড়িত আছি। তা আপনাদের কথাবার্তা সবই আমাদের ভালো লাগে। তো আমরা খুব রিমোট এরিয়ায় থাকি, তো চারিদিকে নদী, বন, জঙ্গল, ফরেস্ট এরিয়া আমাদের। তা অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমরা খুব পিছিয়ে পড়েছি। এখানে তেমন কোনো সংস্থা নেই যে আমাদের হেল্প করে। হ্যাঁ, তো অনেক ধুকে আমরা চলছি। তার ভিতর দিয়েও আমরা সমাজে যতটুকু পারি আমরা সাহায্য করে যাচ্ছি, বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে যারা আসছে তাদের করে যাচ্ছি। তা আপনারা একটু চেষ্টা করবেন আমাদের দিকে তাকিয়ে, যে আমরা এই সংস্থাটাকে আরো কি করে মহৎ সমাজের কাজে লাগাতে পারি, সমাজের আরো বৃহৎ কোনো স্বার্থে আমরা লাগতে পারি কিনা, সেই চেষ্টা তো আপনারা করবেন। এটাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ। কারণ আপনি যদি কোনোদিন এখানে আসেন উত্তরবঙ্গে, হ্যাঁ, তাহলে দেখবেন যে আমাদের লোকেশনটা কি, একদম নদীর পার, পাহাড়ি নদী, ফরেস্ট, হাতি, গন্ডার সবকিছু মিলে আমরা আছি। হ্যাঁ, জায়গাটা ভালো, হ্যাঁ, মানে টুরিস্টের পক্ষে জায়গাটা খুবই ভালো, কিন্তু এইসব সোসাইটি চালানোর পক্ষে জায়গাটা ঠিক উপযুক্ত নয়। এখানে আমরা সেরকম কোনো সোর্সও পাই না যে এরা এসে আমাদের ডোনেট করবে, এরা হেল্প করবে। হ্যাঁ, সে মানসিকতাটার দিক থেকে একটু আমরা পিছিয়ে আছি। তবুও আমরা কোনো রকমে চালিয়ে যাচ্ছি, আমরা যতটা পারি সমাজকে দিয়ে যাচ্ছি, আরো যাতে দিতে পারি সেই দিকটা একটু আপনারা দেখুন, এই আমার অনুরোধ। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ভালো লাগলো তার কথা। তবে হাতি বাঘ ভাল্লুক শুনে তো আমার একটু ভয় লাগলো যেতে। হাতি বাঘ ভাল্লুকের মাঝখানে থাকলে আমার তো একটু ভয় লেগে গেল। আমরা থাকি তাই যোগ করলাম, মানে আমাদের এখান থেকে 8-10 কিলোমিটার হচ্ছে ফরেস্ট,
যখন তখন চলে আসতেছে হাতি, বাড়ির পেছনে হাতি। তাহলে তাহলে আমরা কি করবো? হাতি, আপনারা তো অভ্যস্ত, আমরা তো হাতি। আপনারা আসলে আমি দেখিয়ে দিব, হাতি ঘন্টা দেখিয়ে দিব, চলে আসবে। अच्छा, आप लोग का प्लीज आप लोग का वीडियो को ऑन करिए, हम एक फोटो खींचेंगे सबका साथ एक फ्रेम। हम लोग प्लीज आप लोग का वीडियो को ऑन कर दीजिए। गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। प्लीज आप लोग का वीडियो को ऑन कर दीजिए, हम लोग का फोटो खींच लेंगे एक फ्रेम में। हम लोग on your video, please switch on your video with makeup if possible। प्लीज आप लोग का वीडियो को सौमिता सेन, शुभजीत सरकार, आप लोग का वीडियो को ऑन कर दीजिए। सौमिता सेन, सुमना मंडल, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। सुष्मिता सेन, ओके। सुमना मंडल, शुभजीत सरकार, सुमना मंडल। गायत्री परिदा, तपस्विनी दास, छाया, सुभाषिष, आप लोग का चंपा, दीपक कुमार शाह, आप लोग का वीडियो को ऑन कर दीजिए प्लीज। कल्याणी, आप लोग का प्लीज वीडियो को ऑन कर दीजिए। सुलोचना बेहरा, अब आप लोग वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो का मतलब स्विच ऑन योर वीडियो ऑन कर दीजिए सबका। प्रतिभा अनेके ऑन करें नहीं, प्लीज ऑन कीजिए, स्विच ऑन योर वीडियो। सुभाष, ঠিক আছে, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टिल वी मीट अगेन। everybody, team member as well, bye। थैंक यू, आप लोग अच्छा से रहिए। थैंक यू। और कुछ आप लोग को तो पूछना तो नहीं है ना, अभी हम बंद कर देंगे। फिर आप लोग का फर्स्ट टाइम में व्हाट्सएप में आप लोग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 दिन का अंदर व्हाट्सएप में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप लोग सर्टिफिकेट को पहले चेक कर लीजिए, मतलब आप लोग का सर्टिफिकेट ठीक रहेगा तो ओके कर दीजिए प्लीज, ओके। देन आफ्टर 7 days बाय मेल फाइनल सर्टिफिकेट, ओके। আপনারা তো কিছু বলতে চাইলে স্পিকার অন করতে পারেন। স্যার বলছি 3 দিনের মধ্যে আসবে স্যার? আর 3 দিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়ার আর কি, হ্যাঁ, যাদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। বাই হোয়াটসঅ্যাপে সার্টিফিকেট চলে যাবে। Thank you, sir. Very interactive session, sir. Thank you so much. Hello. Thank you. স্যার বলছি যে থ্যাংক ইউ স্যার, ভেরি নাইস সেশন স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. I think we all missed meeting each other, but thank you so much. Thank you, সবাই ভালো থাকবেন, आप लोग अच्छा रहिए। God bless, thank you. और एक बार सबको जो CRE टीम है आप लोग को वेस्ट बंगाल में आइए, तो एक बार हम लोग को दार्जिलिंग घूमने के लिए आइए, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, सिलीगुड़ी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो सर। मैम बताइए मैम। हाँ सर, मेरा CRE का रिन्यूअल करना पड़ेगा, तो मैं जब डैशबोर्ड में देखती हूँ पहले आपका TDS जो हुआ था वो उसने अपलोड किया है, तो इस जो 30 पॉइंट का CRE हमने किया है वो भी क्या अपलोड होगी सर? प्लीज आप पर्सनली फोन कर दीजिए हम लोग को, आप लोग का क्या वो हम लोग को सुनना पड़ेगा। एक्चुअली ये मैटर तो हम लोग का नहीं है, RCI का मैटर है,
ठीक है, उसमें हम लोग सर्टिफिकेट आपको दे दिया है, आप लोग को आ गया है पॉइंट। सर आपको क्या पर्सनली व्हाट्सएप करना पड़ेगा सर, मेरा जो रिक्वायरमेंट है? मतलब हम लोग को तो सर्टिफिकेट आपको दे दिया ना, सर्टिफिकेट मिल गया तो। हाँ हाँ, और आरसीआई में जो डैशबोर्ड में सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो कितने दिन से तक हो जाएगा? वो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम लोग करने का बाद रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट लिखने का बाद सभी आप लोग का सर्टिफिकेट सभी का पास पहले चला जाएगा। सर्टिफिकेट आप लोग ओके करेगा, मतलब देखेंगे कोई गलती तो नहीं है, CRR नंबर और नेम का स्पेलिंग ये सारा देख के फिर बाद में हम लोग आप लोग को सर्टिफिकेट का लिस्ट तैयारी करेंगे, फिर बाद में हम लोग RCI में भेजेंगे और 1 महीना लग जाएगा रिपोर्ट तैयारी करते करते। ओके, तो मेरा तो रिन्यूअल डेट हो गया जनवरी में, तो अभी मैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो रिन्यूअल कर सकूंगी? हाँ, वो तो आपका देखिए वो मैटर हम तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग का जो काम है हम लोग CRE आपको करा दिया है, सर्टिफिकेट हम भेज देंगे, रिपोर्ट हम भेज देंगे RCI को, ठीक है ना, वो हम बता नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ी बहुत बाबू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ভালো থাকবেন স্যার। ঠিক 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 আছে, তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। थैंक यू। ভালো থাকবেন। चलो वेस्ट बंगाल आएंगे तो बंगाल स्वीट्स खिलानी पड़ेगी आपको। क्या? आ जाइए। अगर हम वेस्ट बंगाल आएंगे तो आपको बंगाल स्वीट्स खिलानी पड़ेगी हमें। पक्का, जरूर, है ना सर? जरूर जरूर। ठीक है। बंगाल आएगा तो बंगाल का मिठाई नहीं। आप भी कभी कोटा आओ तो हम आपको कचौरी खिलाएंगे सर। राजस्थान आइए कोटा, हम आपको कचौरी जरूर खिलाएंगे। अरे राजस्थान तो मैं था, 1.5 साल था राजस्थान में, कचौरी तो खाया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में थे सर? मैं जोधपुर में था। अच्छा, हाँ जोधपुर में मीठी कचौरी मिलती है। थैंक यू भाई। आपको मीठी कचौरी खिलाएंगे। मैं जोधपुर में था 1.5 साल। अच्छा, आप कभी कोटा आइए सर। आप कोटा आएंगे, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का मैंने काफी टाइम फोन भी किया था। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है ना आप लोग का? हेलो सर। हेलो थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके।